branches. With these words, we present before you Sri Avinash Gupta ji, sir. Welcome, sir. Thank you. Thank you, Gidari ji, for nice introduction. And thank you, Nitesh bhai, for calling me here on this platform of views exchange. So when I see this views exchange, so I feel that there will be more interaction and exchange of views than a one-way lecture. And then I saw Saroji is there, so then definitely we will be having more interaction than this one-way session. And I hope that I would be able to justify the topic and solve all the queries to the best of my ability. But it is always great, and whenever Nitesh bhai calls me, so it is like an order. We have to adhere with the order of Nitesh bhai. But it is always nice to come to Calcutta virtually most of the times and speaking on various topics. Sir, let me come back to the subject given to me today. That is basically the tax audit. We all know that tax audit is an old concept. Everybody is doing it. But what is so special about this tax audit in this year or these years? So there are two things what we have to keep in mind while doing the tax audit. So earlier, everybody used to do a tax audit. Everybody used to get the tax audit done, etc., etc. But there are two new things which have started with this tax audit. The first is last year or last 2 years, the institute have started taking disciplinary actions against the chartered accountants who are doing the tax audit in excess of the limit. So this is one new thing which has started in last 2 years, and about more than 100 chartered accountants have been found guilty in this particular clause. So this is new. And the another thing is we have two new clauses, 30C and clause number 44, which have been introduced this year. So these are the two new things which we need to take care. For the first thing, my request is that the institute have given a limit of 60 tax audit per person or 60 tax audit per partner in case of a partnership firm. And that limit is applicable only in two cases, that is 44AB-A and 44AB-B. So CDE is not applicable. So just to give you brief about the same, we all know that tax audit we have to do under section 44AB. And under 44AB, there are 5 sub clauses under which we have to get the tax audit done. A clause says that every person who is doing a business is under an obligation to get his accounts audited under 44ABA if the gross turnover or gross receipts of that SSC do not that exceeds rupees 1 crore. And then there is a proviso to this section which says that the limit of 1 crore will be substituted by 10 crore if 95% of the payments or 95% of the receipts is other than cash. So that's the proviso we have. So this is 44ABA. B says that any person who is running or doing a profession as specified under section 44AA, if the gross receipt exceeds 50 lakh rupees, then in that case, they are under an obligation to get his accounts audited. So A is for business if it exceeds 1 crore or 10 crore as the case may be. B is for professionals, or that professionals has to be a specified professional as referred under 44AA, and then gross receipt exceeds 50 lakh rupees. Then there is a clause C, D, and E. So C, D, and E says that clause C says if you are liable to be audited under section 44AE, D clause says if you are liable for audit under section 44ADA, or E clause says if you are liable under section 44AD. So अगर आप 44AE, ADA और AD इन 3 sections में prescribed profit ना दिखाने के कारण आपके एसएससी का अगर ऑडिट हो रहा है, so then under 44AB, C, D, and E, you are supposed to get the accounts audited under these 3 sections, in these 3 clauses. अगर इन 3 clauses में आप ऑडिट कर रहे हो तो आप 1 लाख ऑडिट करो, 2 लाख ऑडिट करो, 5 लाख ऑडिट करो, there is no restriction. But for 1 and 2, the maximum limit allowed is only 60. That is what we need to do. We need to
do in this case. So my request to all of you is that please do not exceed the limit that have been prescribed by the institute. Otherwise, you will be in a big trouble. And now UDIN also is another way where institute will get to know that how many audit you have done. And then you also select whatever clause you are doing in a syncing way that, okay, if I am doing in under A, then please select A. Otherwise, C, D, E, whatever clause it is there, while doing the tax audit as well as while generating the UDIN, both has to be kept in mind. So this is about the overall applicability of the tax audit. We all know about this. Now let me come straightforwardly to the two new clauses which are most important, and everybody is talking about it. Everybody is discussing about the same, that how to comply with these two clauses. The first clause which is there under clause 44, which was basically the details that we have to fill with respect to GST expenditure or expenditure paid on GST, etc., etc. So now what is this clause says? The clause says that if the assessee have incurred expenditure, it is not specifying that whether it is a revenue expenditure or a capital expenditure. So both the expenditures has to be given under this clause 44. So whether the assessee have incurred the revenue expenditure or capital expenditure, both has to be reported here. Then if we have incurred any expenditure during the year, then the same has to be reported under clause 44 in the below manner. Then there are 7 columns under which you have to give the details, and you have to give details in any number of rows. So you can give all the details in one row, or you may have 2 rows, 3 rows, 4 rows, whatever you can do. So there are option of using multiple rows as well. So it says that first column talks about what is the total amount of expenditure which have been incurred by the assessee. Out of this total expenditure, we have to give details of this thing into 4 subcategories. That out of this total expenditure, how much is the expenditure which have been purchased or services being procured from the registered dealer. And under registered dealer, this says that on which GST is exempt. Second, on which the dealer is a composition dealer. And the third column, it says what expenditure incurred or expenditure goods purchased or services procured from a dealer on which normal GST have been charged. Fourth column says that how much is the total amount of payment made to the registered person. And the last column, it says that amount purchased or purchases or services procured from unregistered person. तो मुझे ये 5 कॉलम्स के अंदर ये डिटेल देनी है, टोटल एक्सपेंडिचर मेरा जितना भी हुआ उसको कितना मैंने एग्जाम जीएसटी वाला लिया, कितना मैंने कंपोजिशन डीलर से लिया, कितना मैंने एक्सपेंडिचर जो इनकर किया वो ऐसे बंदे से लिया जिसने मेरे को प्रॉपर जीएसटी का बिल दिया है, उनको टोटल मैंने कितनी पेमेंट करी, और जो बच गया वो आखिरी में मेरे को बताना है कि कितना मेरा अनरजिस्टर्ड पर्सन से मैंने ये डिटेल ली। अब इसमें क्वेश्चन आया पहला, एग्जाम वाले को क्या करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जाम जीएसटी। सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैव इशूड अ गाइडेंस नोट. Under the guidance note, they have classified that there may be a 3 type of goods or services on which GST is not applicable. So first type of service might be that there is no GST because the particular goods or services are outside the purview of GST law itself. कि GST उनके ऊपर लगता ही नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, they are outside the scope of GST. Similarly, there is liquor. So this is outside the purview of GST itself. तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ऐसे गुड्स हो सकते हैं, ऐसी सर्विसेज हो सकती हैं जो जीएसटी लॉ से ही बाहर हैं. Then they said there would be some goods or services on which the rate of GST is nil. So this is we call as a nil rated goods. So जैसे पेट्रोलियम, so पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं they are all nil rated goods etc. So वो नील रेटेड वाले भी हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिनके ऊपर क्या है, मेरा जीएसटी चार्ज नहीं होता बिकॉज उसका रेट ऑफ जीएसटी जो है वो नील है. थर्ड, देयर मे बी सर्टेन गुड्स और सर्विसेज ऑन विच देयर इज अ स्पेसिफिक एग्जम्पशन व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड ऑन दिस, की भाई इसके ऊपर एग्जम्पशन थी, इस वजह से जीएसटी चार्ज नहीं होता. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई रेजिडेंशियल यूनिट ली
फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस अगर मैंने कोई लिया डायरेक्टर के रेजिडेंस के लिए एटसेट्रा, तो दैट इज एन एग्जम्प्टेड सप्लाई वो है। या मैंने कोई किसी कॉलेज से किसी यूनिवर्सिटी से कोई रजिस्टर्ड कोर्स कराया अपने एम्प्लॉइज को, या किसी ने कोई एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम किया एटसेट्रा एटसेट्रा, सो दोज आर कवर्ड बाय एन एग्जम्पशन नोटिफिकेशन कि अगर आप इस तरह की कोई सर्विस देंगे तो वो एग्जम्प्ट होगी। तो इंस्टीट्यूट ने हमें ये कहा कि तीनों तरह की कोई भी सर्विस हो या तीनों में से कोई भी गुड्स हो जिनके अंदर क्या हो, या तो वो जीएसटी के लॉ के परव्यू से बाहर हो, या वो जीएसटी में नील रेटेड हो, या जीएसटी में वो एग्जम्प्टेड हो बिकॉज ऑफ सम एग्जम्पशन बीइंग प्रोवाइडेड और एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। सो एग्रीगेट ऑफ 3 has to be reported in the first column about the exempt GST. तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पावर परचेज करती है फ्रॉम पावर जनरेटर। सो जो पावर परचेज होती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। सो दोज हैज टू बी रिपोर्टेड अंडर कॉलम नंबर 1। सिमिलरली देयर मे बी अ केस ऑफ अ पेट्रोल पंप। सो पेट्रोल पंप डीलर होता है, दैट पेट्रोल पंप डीलर बाइंग पेट्रोल from the petroleum company like IOCL, HPCL or any other company, so on which GST is exempted. So that also has to be reported under exempted charge. There may be a case of a restaurant or there is a case of a hotel. They are buying liquor from either for the consumption in the kitchen or maybe for the bar, etc. So whatever purchases they are making for liquor, so that is also an exempt that needs to be reported under column number 1 itself, about the exempted goods or exempted services or services on which GST have not been charged. B column, second column will say that if you have purchased any goods from a composition dealer, so that composition dealer has to, whatever is the purchases made has to be written in the second number column because all composition dealers are registered there. Third, it says that whatever purchases have been made on which proper GST have been charged by the person, whether at 5% or 12% or 18% or 28%, whatever it is, so those things has to be reported under column number 3. Then last column says whatever is the balance which have been left, on which it means you have purchased certain things from unregistered person. So that needs to be reported in the last column, which we have given. Only one issue is there is the RCM that I will take later on the reverse charge. Then between these there is a column which is column number 5, which says total payment made by the assessee to the registered person. So total payment, how we should write it? Institute of Chartered Accountants in its guidance note says that if the assessee is following mercantile basis of accounting, then total payment includes paid. So the total of 1 plus 2 plus 3, that is total of exempted, composition and regular GST has to be written in column number 4. But if the assessee is making putting books of accounts under cash basis of accounting, then whatever is the actual payment made by the assessee during the year needs to be reported under this column about the total payment made. So that's how we need to give these details under this various heads. Now there is a problem with respect to the reverse charge mechanism. So Prateek ji, you might have a client who is importing goods from outside India and then reselling it in India. So at the time of purchase or import of goods, there is no GST which have been charged by the person because these people who are selling these products to you are situated outside India. But at the time of clearance, when you file a bill of entry with the Indian customs authorities, then you have to pay a GST under a reverse charge. IGST has to be paid on these goods under a reverse charge, and which will be allowed as a credit also at the same time when you make the sale. So that is also allowed as a set off. Now the question comes where you will report this transaction of imports on which you have paid GST under the reverse charge. Similarly, you may have paid GST on advocate fee. You may have paid a GST under the GTA. So you must have sponsored some event. On sponsorship services, you have taken
a GST under reverse charge. Royalties, you may have paid royalties during the year. The SSC have paid a royalty during the year on which the GST is payable on a reverse charge basis. So all these people from whom you are receiving services or goods like import, or you are receiving legal services, sponsorship services, or this GTA, etc. So these people might be registered, might not be registered. So an advocate, if it is a law firm, it might be registered. If it is an individual advocate, he may not be registered. So where to show these reverse charge cases? Because in reverse charge cases, there might be both the scenarios. Few parties are registered, few parties are not registered. So where to show, whether to show under the registered person or unregistered person. So that is a call that you have to take. Institute of Chartered Accountant is silent about it. So they have not given any guidance on it, but there would be two views. One view is that if you are sure that persons from whom you have purchased, whether under reverse charge on this, so you assume that all of them are unregistered and show all of them under the unregistered person, because it is very difficult for anybody to see whether they are registered or not. But if you have some mechanism to prove to take out the detail, then you can divide it, or you can simply presume that all are unregistered. Hence, I am putting in the last 7th column, that is purchases made from unregistered person. Or the same may be assumed on another basis, that because GST liability have been discharged on these expenses or goods, then we will treat them that is a GST liable expenses and purchase from the registered, and to be shown under the register as the column under which it was referring that okay, purchases on which GST have been charged. So whatever you do, whether you take this stand or that stand, on that you please disclose it in your 3CA or 3CB, as the case may be, that what stand you are taking in that particular case, but you have to take one stand. Then institute further says there are certain expenditure on which GST have never been charged. So like salary, director remuneration, or there are expenses, there are other expenses like wages, expenses like depreciation, petrol, electricity. So there are many expenditure which we all know that for a general parlance also, no GST have been charged on that. So institute says you may exclude those particular expenses on which on a general basis everybody knows that GST have not been charged. So those may be excluded by not giving detail under clause 44 also. So ये आपके ऊपर choice है कि आप इसको देना चाहें या नहीं देना चाहें. But अगर आप नहीं देते, if you choose not to give these expenses, again you have to disclose the same under form 3CA और 3CB as the case may be. जो भी आप उसमें फाइल कर रहे हैं तो उसके अंदर आप इसको डिस्क्लोज कर दे कि मैं ये सैलरी नहीं दे रहा, मैं डेप्रिसिएशन नहीं दे रहा, मैं इंटरेस्ट नहीं दे रहा, मैं पावर नहीं दे रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा, फ्यूल नहीं दे रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी है वो आप उसमें डाल सकते हैं, जो उसको देख सकते हैं. Then another problem may have come, which somebody will say whether the total given under clause 44 has to match with the profit and loss account, that whatever is the expenses there in the P&L, it should match. Answer is no, because under clause 44 you are supposed to give both capital as well as revenue. So in this case, if you are giving more than one expenditure, which is revenue plus capital, it cannot match with the total given under 44 also, or debit side of the P&L account. So don't try to match both of them. This is not desirable, not required. Then there may be another issue which have come relating to the opening debtors, opening creditors, opening stock. So you will say that okay, we have just made a payment for the creditors during the year and we have written off certain debtors. So there may be a bad debt. So in this bad debt, whether we need to show anywhere, there is no need to show bad debt, because bad debt is not liable for GST as such. So this is not required. Then
about the opening stock, etc., which have been consumed during the year. This is also not required to give any details. What you need to give is the total purchases made during the year. So whatever purchases the SESI have made during the year, those needs to be reported under clause 44, or this is no opening plus closing, opening plus purchases minus closing is not required to be reported under this clause 44. Only the purchases made during the year needs to be reported. So these are various issues which have come up in the clause 44. So that I have tried to give a gist of what to do and what not to do. The final decision remains with you. Now I think somebody will help me with taking any queries that we have on this issue, on this clause 44. So we can deal with the queries. Nidesh ji or somebody will take up the queries. Yes, sir, we can take up the queries. Yeah. You please read one by one so that I can answer it. Yeah, Pramod ji has asked if we have not availed ITC on any expenses, do we need to fill clause 44? Yes. This is also one more issue which I forgot to tell. So there are many industries like electricity company, liquor company, or any company on which the GST rate is nil or not applicable. So they may have incurred certain expenditure. So even those cases, including like a doctor, an advocate, or an hospital, even if they have incurred a lot of expenditure on which GST is paid during the year. So even on those cases also, we need to report this clause 44. Second, that whatever amount we are writing, that may be inclusive of GST. So for example, in case of a hospital, if you are doing a tax audit, so all hospitals are not subject to GST, they are exempt, but their medicine, their consumables, their other laundry services and other many services like that are liable for GST, which they charge to their P&L account. So instead of 100 rupees, they charge 118 directly. So then in that case, you have to take the aggregate amount, which is inclusive of GST. So there is no need to bifurcate those expenses into what is the base amount and how much is the GST charge. So that also you can always do it like this. जी मैम आगे चलें. हाँ सर. सर एक क्वेश्चन है अपना कि पेट्रोलियम नील रेटेड सप्लाई में शुड वी कंसीडर और नॉन रेटेड नॉन टैक्सेबल सप्लाई. मैडम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसको एग्जाम में डालने को कह रहा है फर्स्ट उसमें, तो इसलिए तो उन्होंने स्पेसिफिकली अपनी गाइडेंस नोट में लिखा है कि ऑल नील रेटेड हैज टू बी कवर्ड अंडर एग्जम्प्टेड. बाकी आप उसको फुल में डालना चाहते हैं फुल में डाल दीजिए, बट वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी. प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप फुल रेटेड में डालेंगे तो टोटल अमाउंट जो है वो जितना एक्सपेंसेस होगा और जो आपका 2A होगा उसमें अगर डिफरेंस आ गया तो देन इट माइट बी अ प्रॉब्लम एट अ लेटर डेट. सो बहुत सारे लोग प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं, कॉलम नंबर 3 जो है मेरा जीएसटी वाला है उसके अंदर वो 2A में जितना उनका क्रेडिट आया हुआ है वो उतना ही डाल रहे हैं. So that is what is another solution, that okay, whatever is available as a credit in the GST portal for entire year, but practically this is an amount on which GST have been charged. It's because all this is the B2B sale what they made. But the only problem in this is if there is certain expenditure which have not been reflected into it, so then it will be a problem. But one has to see. So आप उसकी देख के फैक्ट्स ऑफ द केस के बेसिस पे आप ये डिसीजन ले सकते हैं. सर राहुल मोदी जी का क्वेश्चन है वेयर टू शो बैड डेट अमाउंट एज पर क्लॉज 44. मैडम बैड डेट अमाउंट को राहुल जी आइडियली कहीं पे भी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट अगर आप दिखाना भी चाहते हैं तो उसको एग्जम्प्टेड में दिखाएंगे. सैलरी, बैड डेट, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, इंटरेस्ट ऑल आर एग्जेम्प्ट. तो एग्जेम्प्ट में दिखाना है. ओके सर. एंड सर पृथ्वीराज जी का एक क्वेश्चन है कि हाउ ऑडिटर कैन अंडरस्टैंड द एक्सपेंसेस फ्रॉम कंपोजिट रजिस्टर्ड पर्सन. तो एनी डिस्क्लेमर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम मैनेजमेंट और सर आप मैनेजमेंट को बोलिए
कि अपनी जितनी भी पार्टीज से ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन करिए, लिस्ट ऑफ पार्टीज तो हर कोई हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर निकाल के दे देगा। उस लिस्ट ऑफ पार्टीज में यू प्लीज चेक इट दैट हाउ मेनी पार्टीज आर अंडर कंपोजिशन स्कीम। सो जो है आपके पास एक या दो या पांच निकलेंगी जो कंपोजिशन में होगी, बाकी कोई कंपोजिशन में होगा ही नहीं। जिसके आगे जीएसटी नंबर भी होगा और जीएसटी का आप क्रेडिट नहीं ले रहे होंगे वो कंपोजिशन में है, सिंपल। एक क्वेश्चन आया है, एक सेकंड। सर प्रमोद जी का एक क्वेश्चन है कि एक फर्म है जिसका टर्नओवर इज 1.5 करोड़ है, but cash receipts and payment doesn't exceed 5% of total payments or receipts. हाँ जी, So, बिल्कुल ठीक है। tax audit is not required to be done, but the firm needs to maintain 4480 8% as उसमें कभी भी ऑप्टेड नहीं किया है, पुराने में 4480 कभी भी ऑप्टेड नहीं किया है। तो सर अगर आपने फर्म ने 4480 ऑप्ट नहीं किया है तो ये कहीं पे भी कोई जरूरत नहीं है 8% की। आई डोंट नो, everywhere it has been reiterated to me that even if they are not opted for 4480 or they are going for 44AB proviso, so they have to maintain 8%. Sir, there is absolutely no requirement. Even if your turnover is 9 crore 80 lakhs and your profit is only 1%, this is absolutely fine. There is no need of any tax audit. And there is also no need of maintaining 6% or 8% of the turnover. That is not at all required. So आप अपना नॉर्मली 1.5 करोड़ की टर्नओवर है आपका, उसका प्रोवाइजो का बेनिफिट लें, जर्नल 1 में उसको टिक करें और उसके बाद जो भी उसका प्रॉफिट है 1% है, 2 है, 10 है, 20 है, 25 है, whatever is the profit, that you can always go for it because you have never opted for 4480 in past. So आपको दोबारा कोई आवश्यकता नहीं है। जिस भी साल आप ऑप्ट कर लोगे उस साल और उसके साल उसके बाद आपके ऊपर जो है वो 6% और 8% की प्रोविजन अप्लाई होगी। अगर आपने नहीं किया है तो आपको इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमारा सीपीसी भी कहता है। However, अगर हम स्ट्रिक्टली इफ वी रीड द लैंग्वेज ऑफ द लॉ, then the language of 4480 says that it is mandatory and you have to opt for 4480 only and have to show at least 6% or 8% of the profit. And then if you are not doing so, then you have to get your account audited. However, the CPC and the income tax department have taken a liberal view and they have said that whether to go for 4480 or not, the option lies with the SSC. And if they do not choose to go for 4480, then they can remain under the normal set of books of accounts and they need to get their accounts audited if it exceeds 1 crore or if they fall under the category of 1 to 10 crore with more than 95% payment or receipt other than cash. So then in that case, they may opt for that. So there is no need to go for 4480. That is what Income Tax Department as well as CPC Bangalore believes, and they have taken a liberal view on this, so that you can always refer and see that you can take the benefit. Okay, sir. Sir, Vishal ji का question है, do we have to give expense wise detail or aggregate amounts for clause 44? देखिए, आप चाहे इंडिविजुअल डिटेल दे, मतलब सिंगल लाइन में दे, या आप जो है पूरा एक्सपेंस वाइज 10 हेड्स में 10 लाइन आइटम में दे दें। लॉ आपको या 3CD में ऐसी कोई प्रोहिबिशन नहीं है जहां पे वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता हो कि सिंगल में देना है या मल्टीपल लाइन आइटम। 11 अगस्त से पहले जो यूटिलिटी थी वहां पे एक सिंगल एंट्री में देना था, बट 11 अगस्त के बाद जो नई यूटिलिटी अभी आई है डिपार्टमेंट की, उसके अंदर आपको मल्टीपल लाइन आइटम्स में डिटेल्स देना उन्होंने अलाउ किया है, so that you may give expense wise detail also. So that is what you can do it. So the choice is yours whether you want to give a single detail or you want to go for multiple line items with expense wise. दोनों तरह से दे सकते हैं। Okay sir. सर अभी तो क्वेश्चंस आई थिंक यही है, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपने। चलिए जी, और कोई क्वेश्चंस है अगर आपको तो प्लीज जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो फिर then I move to the next clause which is 30C. This is also an important clause that we have to deal with. चलिए जी,
I don't think कि कोई और questions हैं. So let me move further to the next clause, which is 30C. So this 30C is also an important clause which have been added this year, or it is already added, but it was made applicable for all the tax audit which have been done or conducted on or after 1st of April 2022. अब ये clause number 30 क्या कहता है, बड़ा important है. Clause number 30 ये कहता है कि in the opinion of the tax auditor, is there any arrangement or any transaction which is referred to as impermissible avoidance agreement as per section 96 of the Income Tax Act, which we generally call as GAR, Journal Anti Avoidance Rules. So अगर आपके ओपिनियन में, तो पल्लवी जी मान लीजिए आप एक टैक्स ऑडिटर हैं और मैं एक असेसी हूं, क्या आपके ओपिनियन में जब आप मेरा टैक्स ऑडिट कर रही हैं, ऐसी कोई अरेंजमेंट या ऐसी कोई ट्रांजैक्शन सामने आई, उस ट्रांजैक्शन को देख के आपको अगर ऐसा लगा कि ये एक इम्परमिसिबल स्टैंडर्ड है या इम्परमिसिबल ट्रांजैक्शन है, जस्ट प्लीज होल्ड ऑन, आई गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल फ्रॉम द डिपार्टमेंट. purchase
Thank you, sir. Thank you. Sorry, I got a call from the CBDT, so that's something urgent. No problem, sir. Yeah. We can continue. Yeah. So where we are, okay, we are at clause number 30C. So this 30C says that in the opinion of the tax auditor, if they believe there was some arrangement or transaction during the year which lacks or which is an impermissible arrangement, तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है. मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि ये इस तरह की कैसी चीजें हो. मान लीजिए पल्लवी जी ने एक इनका क्लाइंट था, वो 10 रुपए का कोई सामान बनाता था और उसको 100 रुपए में बेच देता था. So he earns a profit of 90 rupees by selling that particular item, and that item is always exported. So वो उसको क्या कर देते थे, एक्सपोर्ट कर. साल में वो 1 करोड़ आइटम बना लेता था. So they have done about 1 crore items they manufacture and sell it. So out of this 1 crore item, he earns a profit of 90 per item, which is 90 crores. So 90 crore rupees का जो उसको जो होता था वो प्रॉफिट होता था. And he used to pay tax in India on this 90 crores. Then after discussing with all this, so she believes that we should do some kind of a tax plan. That SSC opened one office in Dubai. They have opened a subsidiary in Dubai, and that pen they used to sell from India to Dubai company at 15 rupees, and Dubai company will export it to the ultimate customer at 100 rupees. So the profit which is there in India is 5 rupees per pen, and remaining 85, what is the profit that have already been sent to Dubai and booked in the Dubai company. So ये एक arrangement है. और पल्लवी जी आप इस एसएससी का टैक्स ऑडिट कर रही हैं. सो अब आपको ये बताना है कि क्या ये अरेंजमेंट जो हुआ जिसमें हमने प्रॉफिट जो है वो 90 करोड़ से घटा के उसका जो है 85 करोड़ का ट्रांसफर कर दिया और 5 करोड़ के प्रॉफिट पे हम इंडिया में टैक्स दे रहे हैं. सो क्या इस अरेंजमेंट को हम 96 में कवर कर सकते हैं कि 96 में जो हमारा सेक्शन 96 है उसके अंदर क्या ये अरेंजमेंट इम्परमिसिबल अरेंजमेंट है? उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेक्शन 96 पढ़ना पड़ेगा जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि व्हाट आर दी इम्परमिसिबल अरेंजमेंट्स. सो अगर आप देखें तो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट्स और एग्रीमेंट्स के लिए उसने कहा है वो कौन से अरेंजमेंट्स या एग्रीमेंट्स होंगे. द बेसिक पर्पस और द मेन पर्पस ऑफ द सेम इज टू अवॉइड टैक्स. तो अगर मैं किसी भी तरह का कोई टैक्स बेनिफिट ले रहा हूं या अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर रहा हूं, उसी पर्पस के लिए मैंने ये अरेंजमेंट या मैंने मतलब मेरे एसएससी ने जिसका मैं टैक्स ऑडिट कर रहा हूं उसने ये अरेंजमेंट किया तो ये 96 में कवर्ड है. और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ये तो बेसिक पर्पस था ही, क्योंकि मेरा 90 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था, मैंने उसको 5 करोड़ में रिड्यूस करके दुबई में 85% इसलिए शिफ्ट किया ताकि मेरे को वहां पे टैक्स ना लगे. सो अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट आपको दिखाई दिया एज अ टैक्स ऑडिटर, देन द सेम नीड्स टू बी रिपोर्टेड अंडर क्लॉज 30C. और उसके अंदर आपको ये भी बताना है कि कितने अमाउंट का टैक्स बेनिफिट लिएगा, कितना टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस इंटरेस्ट आप जो है ये आपको उस पर्टिकुलर चीज में आप उस 30C क्लॉज में आपको देना पड़ेगा. इसके बाद वो फर्दर कहता है देयर मे बी अनदर अरेंजमेंट और एग्रीमेंट्स व्हिच विल गिव राइज टू ट्रांसफर ऑफ द कॉपीराइट्स और द इंटेंजिबल. सो मैंने कोई इंटेंजिबल बनाया, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने कोई और कॉपीराइट बनाया और उस कॉपीराइट को मैंने रॉयल्टी पे देना है, बट वो कॉपीराइट मैंने क्या किया, नीदरलैंड में शिफ्ट कर दिया बिकॉज नीदरलैंड में इस रॉयल्टी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता या मिनिमल टैक्स है. सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन राइट्स
or any other intangibles to some other country which will give rise to evasion of tax in the country. ये सब लीगली हो रहा है, कोई इलीगल चीज नहीं है, बट इस तरह का अरेंजमेंट हमने करा या कोई हमने लूप होल निकाला अपने इनकम टैक्स एक्ट में और उस लूप होल की वजह से हमने जो है कोई अरेंजमेंट किया जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, टैक्स को बचाना. और देयर मे बी एन अरेंजमेंट और अ ट्रांजैक्शन व्हिच लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, मतलब सिर्फ पेपर ट्रांजैक्शन थी और कुछ नहीं था, ओनली अ पेपर ट्रांजैक्शन व्हिच डू नॉट हैव एनी कमर्शियल सब्सटेंस, ना कोई सामान आया, ना कोई सर्विस ली गई, सिर्फ पेपर पे जो है हमें दिखाया गया. या कोई और ऐसी ट्रांजैक्शन जो नॉर्मली एक बिजनेसमैन अपने नॉर्मल बिजनेस में नहीं करता, तो उसमें मान लीजिए कंपनी जो है एजुकेशन की है और परचेज कर रही है स्टील, एजुकेशन कंपनी इज परचेजिंग स्टील. सो ये क्या हो गया, ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो नॉर्मली कोई नहीं करेगा. किसी एसएससी के यहाँ पे बोगस बिल्स पड़े हैं. So there was invoices which have been fake invoices. During the year, there was a search conducted by the GST department, and the assessee himself has surrendered that yes, he agrees that these are bogus invoices. These are lax commercial substances, or there may be some benefit which have been taken during the year. So इस तरह का कोई भी transaction है जहाँ पे आपके assessee ने आपके opinion में, what is important is it should be in the opinion of the tax auditor that they have to do. हो सकता है और उन्हें जो किया हो वो genuinely किया हो. जैसे पहला एग्जांपल में मैंने कहा कि उसने जो है दुबई में कंपनी खोल के और दुबई में ये एक्सपोर्ट करना शुरू किया. ऐसे क्या हो सकता है जो प्रमोटर था जिसने पहले इंडिया में काम करता था, he might have shifted to Dubai. They may be looking for a bigger market share. They may be looking for a better quality. They must have procured from some other sources also, and they have consolidated everything in Dubai. So there are commercial reasons to do so. So then it is not to be reported here. But if you as a tax auditor come across any such transactions during the year which you believe or in your opinion that is there, the basic purpose is to reduce the tax liability or take the tax benefit, then the same has to be reported under 30C of the tax audit report. So that you have to show it under clause 30C. चलिए, so ये आपको 30C में उन्होंने 1 अप्रैल 22 से रिपोर्ट करने के लिए कहा है कि आपको 30C में ये रिपोर्ट करना पड़ेगा. So please be very very careful about 30C. लेटर ऑन अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई जहां पे इस तरह का अरेंजमेंट पकड़ा गया और आपने रिपोर्ट नहीं किया था, तो then you should have adequate documents available in your file as audit documentation that why you believe this is not an impermissible avoidance arrangement or agreement as per section 96. So ये आपको जो है उसको देखना पड़ेगा that how you will do it. चलिए, इस पर्टिकुलर 30C पे किसी का कोई क्वेश्चन है? इज देयर एनी क्वेरी ऑन 30C? सर 30C पे तो अभी क्वेरी नहीं आई हुई है, बट क्लॉज 44 में ही सैलरी को लेके कुछ को डाउट्स हो रहे हैं अभी भी कि हाँ जी बताइए मैम, क्या डाउट्स है? सर ये है कि सैलरी should be reported under unregistered category instead of exempt. मैडम सैलरी के ऊपर इंस्टीट्यूट ने कहा है कि ये एग्जम्प्टेड की कैटेगरी में आएगा, अनरजिस्टर्ड. सर आप अनरजिस्टर्ड में क्यों देना चाह रहे हो? आप प्लीज पर्सपेक्टिव समझिए इनकम टैक्स का. इनकम टैक्स ये कहेगा आपको कि टोटल एक्सपेंडिचर आपका 200 करोड़, उसमें से अगर 150 करोड़ अनरजिस्टर्ड से है तो आपका केस का रीजन ऑफ स्क्रूटनी ये होगा कि अनरजिस्टर्ड पर्सनों की डिटेल लाओ और देखो कि ये कहीं बोगस तो नहीं है. सो मिनिमल अमाउंट शुड बी शोन अंडर द अनरजिस्टर्ड पर्सन. अगर मैं किसी चीज को पहले 3 कॉलम में किसी भी तरह से फिट कर सकता हूं, चाहे वो एग्जाम्प्ट की कैटेगरी में हो चाहे वो रजिस्टर्ड की कैटेगरी में, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहेगा
या ये सोचेगा उसका सिस्टम कि भाई ठीक है ये उन्होंने सामान खरीदा जिसमें जीएसटी लगता ही नहीं है, जब जीएसटी एग्जेम्प्ट है तो मैं इसको क्या करूं। सेकंड, वो कंपोजिशन वाले छोटे छोटे डीलरों से खरीदा है, कंपोजिशन का तो जीएसटी डिपार्टमेंट वालों ने कंपोजिशन को ऑलरेडी ट्रैक कर रखा है। थर्ड, वो कहेंगे ये वो वाली एक्सपेंडिचर जिसके ऊपर प्रॉपर इनवॉइस, जीएसटी का इनवॉइस आया है, B2B ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट प्रॉपरली पास ऑन हुआ है, तो इसलिए जो है थर्ड कॉलम को वो कहेंगे कि ये दीज आर ऑल जेन्युइन नॉर्मल ट्रांजेक्शन। द लास्ट कॉलम में अगर आप दोगे व्हाट इज द अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उसकी वो स्क्रूटनी जरूर करेंगे कि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन क्यों है। क्या आप इतनी बड़ी कंपनी हो, मान लीजिए रिलायंस जैसी कंपनी जिसका 80 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है और उसमें से 4 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर अनरजिस्टर्ड है, तो वो पूछेंगे ना कि बताओ ये कौन कौन पर्सन है जिससे तुमने 4 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर कर दिया। सो अनरजिस्टर्ड पर्सन तो आपको या तो बैलेंसिंग फिगर होगा या आपको उसको बड़ा ध्यान से देख के डालना, अदरवाइज इट मे क्रिएट सम प्रॉब्लम इन फ्यूचर। तो इसलिए ये नहीं है कि सब कुछ अनरजिस्टर्ड में डाल दें, अनरजिस्टर्ड वुड बी अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। और हो सकता है ये डिटेल जब जीएसटी वालों के साथ शेयर हो तो जीएसटी वाले भी आपसे पूछ सकते हैं कि हाँ जी ये जो अनरजिस्टर्ड वाले हैं जरा इनकी डिटेल दे दो कि कौन कौन से है, कहाँ से है, क्या है, और आपने ये क्यों खरीदा, कैसे खरीदा, किन किन पार्टियों से खरीदा, इनका सारी चीजें लेके आओ, क्या समान था, किससे, किसका पैन नंबर, पेमेंट डिटेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आप अनरजिस्टर्ड में जो भी डालेंगे बड़ा थोड़ा ध्यान से देख के डालें प्लीज। सर वी कैन कंटिन्यू, आई थिंक 30C पे तो अभी क्वेश्चंस नहीं है। जरा ध्यान से कीजिएगा सर, 30C जो है कलकत्ता में बहुत ज्यादा अप्लाई होने वाला है, तो जो एसएससीज है उनका जरा ध्यान से देख के 30C पे रिपोर्टिंग कीजिएगा कि करनी है या नहीं करनी। इवन इफ यू डू नॉट feel that you need to do a reporting under 30C, please obtain an adequate MRL, management representation letter. So आप जो है अपना मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर पहले से बना के तैयार कर रख लें कि उसमें एसएससी को ये कहें कि एसएससी hereby undertake to the auditor that he have not entered into any arrangement or transaction during the year which is prohibited under section 96 of the income tax act or which will or whose basic objective is to evade tax. उसके बाद आप अपना एक टेस्ट चेक करें, टेस्ट चेक का एक डॉक्यूमेंटेशन कर लें कि हाँ जी मैंने टेस्ट चेक में देखा था और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन जो है मैं उस पर रिलाई करता हूँ, हेंस मैटर इज ओवर। सो एटलीस्ट एज अ टैक्स ऑडिटर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देयर इज नो लायबिलिटी ऑन अस कि भाई हमने जो है नहीं देख पाए या हम उसको नहीं पूरा कर पाए, तो आप इसको जो है अवॉइड कर सकते हैं। आप इसमें मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का स्पेशल स्कोप प्लीज इसको लेके जरूर डाल दें, अदरवाइज देयर मे बी सम प्रॉब्लम इन फ्यूचर। तो ये आप 30C का जरूर ले लें। सिमिलरली क्लॉज नंबर 44 में भी आप जो भी डालें, जो भी फिगर जैसे भी हैं उसका बैकअप रखें अपने पास और एसएससी से इसके बैकअप का मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लें कि भाई उसने आपको ये सब चीजें बना के दी, ये जो है इस तरह से आपको जीएसटी का आपको सारी डिटेल डालनी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, तो ये आपको जो है प्रॉपर्ली डालना है। चले जी आगे, एक क्वेश्चन आई थिंक दिख रहा है मेरे को विनोद जी का। डेबिट ऑफ बैंक अकाउंट इज पेयर ड्यू टू ओवरड्रॉन, so to run the business all sales are made through third party, whether it is reported। मेरे को समझ में नहीं आया विनोद जी। क्वेश्चन क्लियर नहीं है एक्चुअली, मैंने भी उनको बोला है कि अपना हैंड्स रेज करके पूछें अगर कुछ है तो। ये क्वेश्चन मेरे पास क्लियर नहीं है, तो आप प्लीज इसके ऊपर आप हैंड रेज करके मेरे से पूछ लें। चलिए सर, अब इसके बाद अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है इन दो क्लॉजेस के बारे में, so let me move to the regular clauses जहां पे हम commonly there are mistakes which have been found। हाँ जी, विनोद गोयल जी कह रहे हैं स्पीकर फॉर द नेक्स्ट लॉट हैज जॉइंड। हाँ सर, मैं बात कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, अगर सर आ गए तो आई वेलकम विनोद गोयल जी। सो मैडम, शुड आई स्टॉप हियर एंड विनोद जी विल टेक इट और शुड आई कंटिन्यू? प्लीज लेट मी नो। सर 2 मिनट्स मेरे को दीजिएगा आप सर। वो क्वेश्चन मैं जस्ट एक बार ये कर रही हूँ। विनोद खेतान जी, आप अपना एक बार क्वेश्चन प्लीज पूछ लीजिए। हाँ विनोद जी। हेलो हेलो
Am I audible? हाँ जी, जी बोलिए, बोलिए सर। See, मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज एक क्लाइंट का अकाउंट ड्यू टू एनपीए ओवरड्राउन हो जाता है और उसका बैंक अकाउंट का डेबिट फ्रीज हो जाता है, तो उस क्लाइंट ने अपना बिजनेस रन करने के लिए किसी थर्ड पार्टी के थ्रू सारा ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिया। जितनी भी सेल्स होती है वो किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देता है, वो उनके क्लाइंट को सेल कर देती है। Whether this is also required to be reported under section under clause 30C? सर एक चीज बताइए सर, ये जो रिपोर्ट हो जाता है या जो भी करता है सर, इसके अंदर क्या कोई प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रही है? कुछ प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रही है सर हो रही है तो इट हैज टू बी रिपोर्टेड। if the entire transaction is there to take some tax benefit or avoiding taxes, then it has to be reported. But अगर आप इस particular transaction में at the end of the year अगर आप ये पाते हैं कि ये जो मैं थर्ड पार्टी से जो मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ उससे टैक्सेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि वहां पे जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो इस कंपनी में वापस आ जाता है, तो इस कंपनी में ही रहता है। अगर टैक्स इम्पैक्ट नील है तो आपको रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये फैक्ट्स ऑफ द केस पे डिपेंड करेंगे। फॉर रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज 30C द बेसिक ऑब्जेक्टिव शुड बी that there should be some kind of a tax benefit which have been claimed or which have been taken by the assessee. अगर टैक्स बेनिफिट नहीं है तो आपको जो है इसको रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उससे ये चीज उससे असेसी से ही राइटिंग में एमआरएल के थ्रू ले लें। थैंक यू वेरी मच। जी जी, एक इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? नहीं सर, और क्वेश्चन नहीं है, यू कैन कंटिन्यू प्लीज। अच्छा, आई थिंक गोयल साहब आ गए तो should I stop and गोयल साहब will take us to the next topic. अगर किसी के टैक्स ऑडिट में if there is any other query on the tax audit, then I am ready to take up those query. हाँ आ गया, मैं मीटिंग चालू हो गई। So I will take up those questions. I think there is no question. So and the next speaker have joined. So now I am handing over the session back to the MOC for further proceeding. जी मैम आप। हाँ जी, वेलकम विनोद सर। नमस्कार। नमस्कार सर। मुझे एक मिनट सर दीजिएगा, मुझे एक मिनट। हेलो, हाँ करो, 2 मिनट 10 मिनट। सर सरोज जी जस्ट ये ज्वाइन करेंगे, सरोज वाइकर जी। ना विनोद जी नमस्कार। टेंशन की आ रही है। Okay sir, namaskar sir, thank you sir, thank you for inviting me. I'll just take a leave. Our next speaker Vinod ji is here, so he will take the session. Sir, would you like to continue after Vinod ji finishes up or कैसा करेंगे, क्योंकि we have a 3 hour sessions. आप बात कर लीजिएगा सर, if I am available so I will join it back. Okay, thank you. Okay, thank you. ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। Yes विनोद जी। So पहले भी आप इंट्रोड्यूस करो ना, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन टू विनोद जी। सर थोड़ा इंटरनेट इशू हो रहा है एक्चुअली मेरे यहाँ पे। ठीक है, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, एक मिनट।
CA Vinod Kumar Goelji is a practicing chartered accountant and a fellow member of the Institute of ICAI and holds postgraduate diploma in alternative dispute resolution, international commercial arbitration from Nalsar University, Hyderabad. He had a good academic record, having secured third rank in graduation degree in 1973, BCom honors of Calcutta University, and the fifth rank on all India basis in the intermediate examination of Chartered Accountancy course in May 1976, being first in the Eastern region. He possesses vast practical experiences of 43 years in the field of company law, auditing of all types and taxation related matters. He is well conversant with regulatory framework in India as applicable to securities and share broking companies and companies engaged in NBFC activities. He was elected director to ANMI National Board of Directors for 3 terms from 2015-16. During such tenure, he held post of convener of Finance and Accounts Committee and chairman of Legal and Finance Committee. He held chairmanship of Eastern India Regional Council of Association of National Exchanges Members of India, 2 terms in 2007-8 and 2013-14. He held chairmanship for 8 terms of Hire Purchase and Lease Association, which is the oldest association of hire purchase and lease financial companies in Eastern India. As a director of VG Capital Market Private Limited, members of NSC and BSC for 26 years, and Samaj Projects Private Limited, ex-members of MCX for 11 years, he possesses vast experience in all aspects related with capital markets, currency markets, and commodity exchanges. He has authored several articles on taxation, company law matters, and capital markets, which have been published in journals. He's a regular guest speaker at CP and other seminars organized by ICAI, ICSI, and other forums. He has organized several seminars and conferences under the aegis of ANMI, CPAI, HPLA. With this, I welcome you, sir, and the entire floor is yours, and we are very eager to hear from you. Welcome, sir. So you're not audible, sir. Am I audible now? Yeah, yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. It was muted. Thank you very much. So, friends, the scheme for settlement framed by Sebi for 2022 has a history. Naturally, the question arises, what settlement? Naturally, you will also envisage that settlement means there has to be some dispute, some litigation, more than one party. One is either prosecution or the regulator, and the other is either the accused or the noticee or the violator. So that is there. Now, when this need of settlement arises, the need of settlement arises when the prosecutor or the regulator or the agency which has initiated the action against the so-called accused or the noticee, both are not sure that they will win or they will lose in the court of law or in the Supreme Court, and the matter goes on and it doesn't benefit to anybody. That is why the question of settlement arises. Now, prior to this settlement scheme 2022, there was a settlement scheme 2020. So the question will arise, why the scheme of settlement of 2020? Sorry, before that, let us discuss the dispute. The dispute is this, that the Sebi carried on investigation of the options transactions, which they termed as illiquid, means they were not traded very often. So they were called it illiquid options in the futures and options segment of Bombay Stock Exchange, BSE, during the period 1/4/2014 to 30th September 2015. So approximately 1.5 years. As we all know, the options and futures are such a thing in which there is no price discovery mechanism, in the sense that there is no circuit filter. As in the cash market, in the shares, if the prices, depending upon the nature of the script, are fixed at 5%, 10%, 20%, either on minus side or on the plus side, they cannot go.
Hi. So in that investigation, the SEBI found that around 291,800 transactions in contracts were held done by the around 14,000 of the entities. And in that process, some entities incurred losses and some entities made profit, which they are saying that these trades were ingenuine for the very reason that the contract was reversed or squared up within a very short span of time at a very big difference of the price. Like if someone bought it at say 10 a.m., he sold it at 10:15 a.m. or earlier. Similarly, if he had sold a contract at 12 p.m. and he bought it back at 12:05 p.m. This way, they are saying, or they SEBI alleged to the people that you have incurred artificial losses and artificial gains, and these transactions we treat as non-genuine. Or the term reversal was also introduced. Earlier, there was no such term of reversal. Naturally, reversal means something which was bought is sold back and something which was sold was bought back. This is the reversal. So much for this. Now, in the case of one noticee, RS Ispat, they imposed the fine and penalty for such transactions, and they went into appeal to the SET, Securities Appellate Tribunal. So Securities Appellate Tribunal held that there are so many cases, as I told you earlier, there were around 40,000 entities spread all over the India. Of course, a fair share of them are located in Eastern India, that is West Bengal or Kolkata. So in RS Ispat case, realizing the gravity of the matter and the vast number of the entities, SET directed SEBI to frame a scheme or a Lok Adalat type of thing so that the matters can be solved in a faster manner. So instead of putting Lok Adalat, SEBI came out a settlement scheme and issued the notices to all the entities, fixing the settlement amount arbitrarily, either 6 lakh, 10 lakh, 12 lakh, according to them. And in the said settlement scheme, they had to give an undertaking that if there is anything objectionable, they will not do any further action or any appeal or other things. So if some of them or some of you who were here in the so many webinars held, of course, during COVID period, that the scheme was discussed in threadbare, and I myself advised the people not to avail the scheme for the very reason that they did not issue show cause notice and they were asking for the money from one side. So जिसको बोलते हैं ना कि prosecutor भी आप ही हो, judge भी आप ही हो, तो वो that way the scheme was not availed by anybody except 1,080 persons. So naturally, they issue show cause notices right from July 2021 onwards to all the such entities who had done these trades on the illiquid auction segment of the BSE. Now you realize the gravity of the thing. They don't have, SEBI don't have the adjudication officers more than 10, because the cases of the investigation don't arise so frequent. Earlier, the cases arose either on insider trading or some price manipulation or on the matter of, say, IPO and other things, but not like this. So they appointed around 50 new these adjudication officers, and slowly the notices were being sent in the bunches of 50-50. The proceedings were large. First, they sent the notice by email. Then they sent the notice by SEBI registered post or speed post. Then the notices asked for a time because 7 years have lapsed. The transactions last done 30th September 15 and the notices were taken up in 2021. 7 years lapsed. People don't have record. They don't maintain the thing. So everybody was asking for extension to reply. In that process, 3 months went away. Then they replied.
After the reply, everybody thought ki I want a personal hearing. The personal hearing was granted, and naturally, if you fix a personal hearing, a reasonable time has to be given. So around 15 days, 20 days prior to that, the hearing is fixed. Then again, also to avoid or delay the matter, the authorized representatives of the noticee or the noticee himself didn't appear on the first date of hearing. So again, a new date of hearing was given. In that manner, the thing went on dragging, and after that, they started passing adjudication orders, imposing the penalty of 5 lakh, which is mandatory, mandatory minimum penalty under section 15 HB for such alleged violation. Now, there is a very interesting thing. Prior to the amendment of this section 15 HP, effective from 9 September 2014, the penalty amount was 1 lakh. So out of these people, some people had transactions held prior to 9 September 2014, and in their cases, the adjudication officers imposed the penalty of 1 lakh. So the new notices who were imposed the penalty of 5 lakh felt aggrieved, and some of them approached the SET. Now, you see, SET has a bench only in Bombay, and if one has sitting in Kolkata has to approach SET, he has to engage a lawyer based in Bombay. In that manner, it was proved to be very costly, and there was no surety of the outcome of the appeal, for the reason that the Supreme Court had earlier in the similar matter of Rakhi Trading Company case given a very wide and detailed analysis and observation on such matters. The crux of the finding was that the platform of the stock exchange cannot be allowed for manipulative type of things. It is a very big order. If time permits, later on after the discussion, I can read out. It is very interesting. So when the people went to the appeal in SET, they cited the Rakhi Trading case as a gospel कि भाई ये तो ब्रह्म वाक्य हो गया, हम तो इसके क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया. आप लोग जानते हैं, हम लोग जो सीए प्रैक्टिस करते हैं कि प्रेसिडेंट्स हैव टू बी applied and the Supreme Court decisions are applicable all over India, and state high court decisions are applicable and to be followed in the state. Again, they said in another case of Global Earth Private Limited in the similar matter held the same view, and whenever the new appeals went to SET, they were not admitting it, simply citing कि भाई my stand remains same as we have done in Global Earth, and the adjudication officers were also citing that decision and the Rakhi Trading, and not listening to the any plea, any pleading, any submission कि साहब this is on anonymous platform, online system, we acted like this, system was accepting, BSE was allowing the trades, so why if the trade was illegal or not permitted, why it was not annulled, all these arguments, and again the SET was flooded with the appeals. So ultimately in an appeal of hearing of around 10 in the Shubman Gill case plus other applicants, SET came out on 30th May of 2022 directing Sebi to frame a scheme fresh whereby they should consider the penalty of 1 lakh for all the notices at any stage, and also in the last paragraph SET advised Sebi to consider the cases of those in which the penalty was already imposed for 5 lakh. In that manner, around 53 appeals of SET was taken over for hearing on 22nd of August, just very few days back, by the SET, and they allowed all the appeals, saying ki let them also take the benefit of the scheme, and disposed. So this way the things went on. Now, another point is that many people did not approach SET for the very reason that if the SET rejects the appeal or didn't give the verdict in your favor, there is no other alternative except to approach Supreme Court. Supreme Court, as we all know, is very difficult to approach and very costly. And then also you are uncertain ki what will be decision when the Supreme Court itself has held Rakhi Trading matter ki we cannot allow the platform of the stock exchange for manipulative trades.
So this way the thing started, and now the SEBI came out with the SEBI settlement scheme 2022. In nutshell, the scheme is nothing but a 6-7 FAQ and the format of the application as well as an undertaking to be given. The undertaking is similar as it was in the SEBI settlement scheme 2020, as well as there is already a regular scheme of settlement. If one has any case pending before the adjudication officer or appellate or SET, he can anytime go for settlement by paying the settlement application fees as well as signing the undertakings, which are now being asked from the notices you want to avail the SEBI settlement scheme 2022. Now, what is the rate of this penalty? So they have brought out 3 slabs. From 1 for transactions or the contract number 1 to 5, the fees is or the penalty is 1 lakh. 2 to 50 contracts, it is 2 lakh, and above 250 contracts, it is 5 lakh plus 10,000 per contract. So, but according to my estimate, around 95% of the entities will fall in the first category of 1 lakh. Along with 1 lakh, you have to pay application fees of 15,000 if you are non-corporate, plus the 18% GST thereon. In the case of corporate, the application fees is 25,000 plus 80% GST. Now, see how the system or the regulators in India work. That left hand doesn't know what right hand is doing. There were some notices under the private trust, family trust, like say in the name of their son or in the daughter, the trust, there were transactions. When they went to put the PAN number, they were treated as corporate and charged 25,000 application fees. I took up the matter to the given site, how you are treating the private trust as a corporate by any definition of SEBI itself or the Companies Act or an Income Tax Act. It cannot be treated as corporate, but say, give me in writing reply in email, it is like that. So only individual and HUF, they are treating as non-corporate, and others partnership, private trust and companies, of course, they are treating as corporate. The matter is a dispute about the 10,000 application fees, whereas it is 15,000, here it is 25,000. But the penalty amount, there is no distinction between corporate or non-corporate. Now, I am reading out the question. The biggest dispute was regarding the question number FAQ 1. When the SET directed them in the last paragraph of the SET order of 13th May 2022, you should give benefit to those also, they came out in a FAQ that what is the eligibility criteria of availing the scheme? The scheme would be applicable in respect of the entities that have executed reversal trades in the liquid stock option segment of BSE between April 1, 2014 and September 30, 2015, and against whom proceedings have been initiated and are pending before any forum or authority, that is like courts, SET, adjudicating officer and recovery officer, provided an appeal has been filed and the same is pending before the SET/court. Entities against whom orders have been passed levying penalty that has not been paid and against whom recovery proceedings have been initiated may be eligible for the scheme only if an appeal is filed and the same is pending before court or SET. So one dedicated website was given for getting a clarification of this, since I had many cases in which the penalty was imposed and they had not applied for the SET appeal. So I took up that question with them, and they have given in the writing that they can make a belated application to SET and get an appeal number, and they can then become eligible. Since the scheme is open from 22nd August 2022 to 21st November 2022, that is roughly 3 months. So to my clients, I have advised to approach SET belated with a condonation of delay. Now they have to convince the SET why they did not came to the appellate before in the given time, which is 45 days from the date of passing of the order. Now, when we open the site, given site, and put your PAN number, in those cases of where the penalty of 5 lakh is already imposed,
they are not opening. It means they are ineligible unless they go for the appeal. Now here the point is this: if 5 lakh is not paid within 45 days of the passing of the order, there is very severe penalty of interest of 1% per month. That means on 5 lakh, 5,000 per month is accruing. And if after a waiting of say 2-3 months, they approach, they give the matter to the recovery officer, then they start recovering. And the recovering process is very hard. Your PAN number will be blocked, your all bank accounts will be frozen, and your all DP accounts will be frozen, and recovery proceeding will start. And even then, even within that, if someone is smart, if he transfers all assets to some other person, then any transfer to outsider within 2 years of the notice is invalid, and out to relatives within 1 year is also invalid. So there is no escape route. Now coming to the scheme, who should avail and who should not avail? Now see, in the scheme, in the notice sent by them pursuant to the scheme, they are giving option to the noticee either to accept the scheme or not to accept. In that case, he can write to them. Then the proceedings up to which stage it was done, it will proceed from there. Like say if the hearing was done, the proceeding will start from hearing. If the reply was filed and no hearing had taken place, then the hearings will be fixed. Now who should not avail? There are 3 instances. There had been some cases in which the noticee has died prior to receipt of the notice, the original notice or the revised notice. So in the case of death, there is Supreme Court decision that any action lies with the death of the noticee or the concerned person. And in adjudication process also, there are several orders of adjudicating officers accepting this verdict, and they have dropped the penalty on the persons who have died. So if the persons who have died and they replied accordingly, and if their orders are pending, they can reply to the notice that we are not availing and my proceeding should continue. Another case is the company which became either stricken off or amalgamated or defunct, and they are also given this. In that case also I am advising, and they can also continue their proceeding, because there are some adjudication orders wherein by citing the cases, if the company was taken off before the receipt of the notice, then the proceedings are dropped. And in the case of amalgamating company, the notices proceedings are dropped against the company against which notice issued, but legally, you know, in the scheme of amalgamation, it is there that the company, merging company or the resulting company will take over all the assets and liabilities. Now it is a matter of them whether they continue the proceeding against the resulting company. But at this stage, they should not opt for the penalty of the scheme, and they should continue their proceedings. This is the matter. 2 matters where the penalty proceeding should continue. Another very, very rare case which I have come across, that the noticee had not a single transaction and the broker wrongly put his code number, and the matter reflected in the Sebi and they issued the notice. In that case, he had filed a FIR against the broker, and broker certified in writing that yes, it is my mistake, this person has not done any transaction. So in that case, if they receive such notice to avail the benefit of the scheme, they should also say ki I will continue to proceed with the proceedings as my case is clear. These are only very 3 rare cases where the penalty should not be accepted or the scheme should not be accepted. Now, many questions arise ki this 1 lakh or 2 lakh is also very harsh and very high, we will not accept. In that case, what will happen? In that case, after the scheme time is over, that is after the 21st of November of 2022, if they have neither availed nor applied for the continuation of the proceedings, their case will be treated as defaulter, and the 5 lakh penalty demand will be raised on them. So this is the consequence, because we know very well with the precedent that SET will not hear. You go with any pleading, any argument, any citation, they will not accept. They will say ये ग्लोबल अर्थ में मैंने बोल दिया डिसीजन, ये मेरा ब्रह्म वाक्य है.
सुप्रीम कोर्ट ने राखी ट्रेडिंग में बोल दिया ये उसका ब्रह्म वाक्य है, आप उसको कितना ही डिस्टिंग्विश कर लीजिए कुछ नहीं सुनेगा। तो अब रह गया चारा कि ये देना है पैसा। तो ये गया क्वेश्चन नंबर 1 जो कि स्कीम का पार्ट है ना। क्वेश्चन 1 2 that is FAQ, not actually question, it is the frequently asked question which they anticipated ki it will arise, so they have and this is the scheme. In case a settlement application has already been filed in respect of the show cause notice issued by the adjudication officer before the scheme was introduced and is pending, should another application be filed? So they are replying ki nahi, they should not. No such applicant shall visit the link given below either with their pen or pay specified settlement amount to settle the proceedings. So that is there. Now question number 3, where can one access the information regarding the scheme? The citation is there. It is a very big link, but if you copy it, it will come there. Question number 4, how to file a settlement application under the scheme? And the answer is an entity desirous of filing a settlement application under the scheme is required to take the following sequential actions. Number 1, click on the following link, which is given this https://SI portal. It is once you save it, it will open easily. Then select the settlement scheme option from the drop down menu of type of category. Then it will ask a type of category. Then you enter the PAN number. A CAPTCHA will come. You click, you read, fill up the CAPTCHA and click go. Then online submission of the following scanned documents: a copy of duly notarized and stamped undertaking and waivers in non-judicial stamp paper duly paid as per annexure 2. The exact format is to be used. I am coming at one point in that later on. A self-attested copy of the PAN card of the applicant, an application for settlement as per annexure 1. That is also they are asking the name, PAN number, notice number, the email ID of the applicant and signature of the applicant. That is of course. Then the payment of the non-refundable settlement application registration fees of rupees 20,000, 5,000 in the case of body corporate and 15,000 in the case of individual, along with GST of 18%. Now, some people have raised query on me ki if I pay this 18% GST, will I get input? So I am replying, these are the mostly cases of individuals who are not registered under GST, and if they pay GST, they are consumer. If there is no output, what will be the way of claiming the input? So it is gone. There is no use. In the case of corporate also, if they are registered and they have an output, they can try to claim it as an input. Payment of the settlement amount as displayed in the respect of the applicant. That is what I said, ki 1 lakh, if the number of contract is 1 to 5, it will show. The site itself will show how many number of contract and how much is your application fees and how much is your settlement amount. So what is the settlement amount applicable for me? Under the scheme, the settlement amount applicable determined on the basis of number of contracts may be accessed by using the following link. Of course, the table is there. 1 to 5 contract, 1 lakh, 5 to 50 contracts, 2 lakh, and above 50, 5 lakh basics plus 10,000 for each contract. What shall be the mode of payment of the application fee / settlement amount mentioned above? Applicant shall make the online payment of the application fees / settlement amount using the following link. So everything is online, no physical. Now here also, as a chartered accountant, practicing chartered accountant, you will find that some of the clients or some of the notices are not familiar to pay online banking. Then they can give the money to your account, that is like the CA's account, and from CA's account it can be paid. So I have asked in writing also. In that case only, as you know, regulators have anything to reply with a rider. They have replied with a rider, provided you have a letter of authorization in your favor, then you can pay. So I have paid in 2-3 cases from my account when the parties were out of station and they transferred, because the portal, when you know pay online, there are so many constants, and if the link goes out, the person will be in difficulty. Since as a chartered accountant, we are taking the money and paying it, it is a case of pure agent. So in case you are registered under, CA is registered under GST, the GST will not be applicable. Or if you have large number of notices
requesting you to pay on their behalf, you can open a separate account so that it is reflected there. The link is given. 7 number FAQ, when will the settlement order be passed under the scheme? Yes, it is important. Many people are asking. Now, the payment receipt will automatically come down. An email will also come that payment has been made. And thereafter, if you again go and click and put the PAN number, it will show paid. Okay. Now, subsequent to the closure of the scheme, a composite settlement order shall be passed by the competent authority for after reconciliation of the record. So, single individual order will not be passed. Those entities who have availed, the single order will be passed. Like our experience in 2020 scheme, 1080 odd people availed it, and after the time for scheme was over, the single order of 1000 entities giving their name, PAN number, and this were passed. 7 number. 8 number. Should one wait till the last day for filing the settlement application under the scheme? The question, naturally, the bureaucratic answer is it is advisable to file a settlement application under the scheme at the earliest in order to avoid last minute rush. This is true. We all see when we are uploading income tax and ROC matters. On the last day, the site is near about to crash. So the scheme would be operational from August 22, 2022 till November 21, 2022. Now the crucial question of question 9, which I already told during my talk, what action would be taken if the scheme is not availed? The answer is, upon conclusion of the scheme 2022, actions as per the relevant provisions of securities law shall be continued against the entities. And in case of any query, technical issues, you may reach at so and so site, or you may contact helpline number. So I contacted that site and raised this objection ki why you are taking this private trust as corporate, but then over the telephone also that DGM told ki it is our system. Then I gave in writing, and 1 or 2 notices applied themselves in the site. They also got the same reply. So this is a way of working of the bureaucrats. Now the annexure 1, the application part A. Before the what are the items to be filled up? Name, trade name of the applicant or co-applicant, PAN number of the applicant, address for correspondence, address, contact number, and email. Suppose if there is a change in the contact number or the email address or the address when the transaction took place, which is in their record, and for that reason many notices also were returned. So then you can fill your current address here. Name and contact details, including email of the contact person, say like ladies or HUF, there is a karta, or somebody else is helping, or somebody else is handling the matter, then his name and email address should be mentioned. Stage at which pending. They already have given the 3 citations: show cause notice, appeal before SET or court, whichever is applicable. So in mostly cases who have not gone to SET, they will write the proceeding is under adjudication officer at the stage of show cause notice, or at the case maybe, suppose if you have replied, then adjudication officer. 6 number, date of show cause notice, appeal before SET or court, including reference number. So naturally the SCN number, which is on the right hand corner, top corner, and the date has to be mentioned. And the document to be uploaded, undertaking and waiver, and copy of the PAN card, self-signed, self-attested PAN card has to be scanned and attested. Now coming to the undertaking, which is crucial. Yes, undertaking the annexure 2, we have to use each and every word as it is, except the name of the person, which is in the first line, I/B so and so, the applicant herein. It is content 22 clauses. It will be difficult and time consuming to read out those 22 clauses. But of course, sorry, it is 13 clauses. It was 22 clauses earlier. Sorry. 13 clauses are there, and everything you are signing, I will not take any action, I will not apply. If suppose in some other cases somebody wins, I will not come back. Why I am telling you, I had queries from people who had availed the scheme of 2020 or who had paid the money after the adjudication order. They are asking me, well, the refund mil jayega kya? So I told them, you yourself signed the undertaking that I am accepting everything. How can you get the refund? It cannot be. Now, the question, the clause number 10,
clause number 10 of the undertaking, I would like everybody to give attention, has two options. I/V for the limited purpose of settlement under these regulations, admit the finding of the fact and conclusion of law, or neither admit nor deny the findings of fact and conclusions of law. Within bracket, they have also told strike off whichever is not applicable and agree to abide by the settlement order as may be passed in accordance with the Securities and Exchange Board of India Settlement Proceedings Regulation 2018 and guidelines and circulars issued by the board in that regard. And the point number 11, we waive our right of taking any legal proceeding against the Securities and Exchange Board of India concerning any of the issues covered in the settlement order that may be passed. So this is crucial. And question number 10, this clause number 10, we should strike up the first option. We should take the option ki I neither admit nor deny. You don't accept the findings. We are saying कि we are neither denying nor accepting. कि मैं नहीं मान रहा हूं, ना मैं मना कर रहा हूं, ना मान रहा हूं. So that because why I am accepting the settlement? I am accepting the settlement. The Sebi is unable to prove his case, and I am also unable to prove my case because of the some decision or the stand taken by the SET. Because if my decisions, my pleas, my citations are not heard and not taken care of or not answered, then I am also in trouble. Why should I accept my charge is correct or the allegation they have put on the notices is correct? So the allegation I am denying, but when I am going for the settlement, I am saying I am not denying, not accepting your allegation. So that is the point. This much is there, sir. Now we can go for questions also. This much is from my side. And I would advise, mind you, 14,000 notices. 14,000, not a small amount. And what has happened during that process of 2021 onwards, when show cause notices were issued, hardly 3,000 notices were issued, and they are also in various stages of proceeding. I know in my cases, even the replies and hearings which finished in the August or September 2021, no order has been passed for their own reason, lack of staff or lack of resources, whatever you can call, or they were in the mind that this much money will not come. During the hearings also, I told them, sir, the 5 lakh penalty is too much and people are not going to pay. So you have to keep the proceedings in abeyance. This way, this is the situation and the amount is very high. Friends, I have come across cases of at least 10 notices in one family. And if 5 lakh was imposed, then 50 lakhs rupees after the 2 years of COVID cash flow difficulties, it was impossible for them to pay. This was the situation. So this is all my submission, and we can take up the queries as yes. Okay. Sir, Vishal Garg ji ka question है, client received order from adjudicating officer in March 22, but no appeal has been filed before SAT. So can he avail this settlement scheme? Yes, the FAQ one clearly says, and even I have obtained a written opinion from them to my query because I also have 2-3 such cases. Today only I have forwarded the matter of the my noticee or my client to the Bombay lawyer. He also had the order of 3rd March, and 45 days have already passed. So my lawyer asked me, what should I put in my petition for condonation of delay? All of you who are practicing income tax know that in tribunal also we can file the petition for condonation, and they are considering. So my lawyer suggested कि उसकी family में कोई कोरोना हो गया था, तो वो ground ले सकते हैं. Fortunately, in my case, the assessee or the noticee was preparing for the CFA level 3 examinations, and you see the linkage between Sebi and others. I was astonished that that student received a notice from Sebi after filing his this registration paper and the for admit card. They raised a query कि we find that in Sebi one case is pending against you. We cannot allow you to sit for the examination unless you clear that matter in CFA. So that he was very nervous. Then I replied to him,
I put the replies to the CFA people also कि there will be settlement scheme, I will avail it, I will pay it. He wrote a letter to the recovery officer also to keep the proceedings in abeyance as per my suggestion. So they are giving the reason, and if the condonation of delay is there, you make a application to SET. Of course, it is a costly affair, no doubt, depending upon how you can manage, but it is costly around 40,000-50,000 rupees, not less than that. Lot of paperwork has to be done, 6 copies have to be made, like we apply to the tribunal, spiral binding, so many documents. But it's still worth, because suppose even if you spend 50,000 rupees and you can go to, you can escape with 1 lakh penalty, still you are saving 3.5 lakh. So it is advisable for them to go in a belated appeal. आप समझ गए भाई साहब? The query is satisfied or not? Sir, probably satisfied. Okay. Because उनका फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं है. ठीक आई है. वुड रिक्वेस्ट राम अवतार जी, उनके कुछ काफी सारे क्वेश्चंस है, तो मैं राम अवतार धूत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार वो अनम्यूट करके अपने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर ले सर से. श्योर. हाँ जी, राम अवतार जी आप प्लीज अनम्यूट करके एक बार क्वेश्चंस पूछ लीजिए अपने. हेलो. हाँ. हेलो. हाँ जी, नमस्कार. हाँ बोलिए राखी जी. सर एक क्वेश्चन है अपना चैट बॉक्स में. क्लाइंट ने एक रिसीव्ड अ लेटर फॉर अप्लाई फॉर सेटलमेंट स्कीम इन year 2020, but he has not received any show cause or any other letter till date from Sebi. तो should he go वो for आएगा सबको आ रहा है. नहीं भी आएगा तो आप अपना पेन नंबर डाल के उस साइट पे डालेंगी तो अपने आप बता देगा, नाम भी बता देगा, किसका कितना सौदा है, कितना कॉन्ट्रैक्ट है, कितना अमाउंट ड्यू है. जब वहां पर डालेंगे ना स्कीम, चूज करेंगे सेटलमेंट स्कीम, फिर कैप्चा डालेंगे तो फिर एक आई एग्री का कॉलम है, उसमें उसको राइट करते उसका नाम आ जाएगा, उसका कितना कॉन्ट्रैक्ट है, कितनी एप्लीकेशन मनी है और कितनी ये मनी है. तो वो वहां से भी कर सकता है, लेकिन ये रिसीव आपको नोटिस आएगी, सबको आ रही है. अब जिनको 2020 में नहीं आई, 2021 में शोकॉज नोटिस नहीं आई, उनको अब आ रही है नए नोटिस जब हो रहे हैं. I told you now, out of the 14,000 the so-called entities who indulge in this state as per their version, only they could take up 3,000. तो ये 11,000 का तो अब आएगा ना, धीरे धीरे आ रहा है. ओके सर. सर राम अवतार धूत जी का क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ. उनका फर्स्ट क्वेश्चन था सर, इज PFUTP 2003 इज एप्लीकेबल? यस, श्योर. वो उसमें जो हम लोगों ने उसका राम अवतार जी का क्यों ये क्वेश्चन है, मैं समझ गया इसकी बैकग्राउंड. कुछ लोगों ने जब ये सेबी की नोटिस आई और उसकी रिप्लाई दी और हमने भी दी, उसमें ये कहा कि PFTP 2003 इंटरमीडिएट्स को ही लागू था. वो बाद में अमेंडमेंट होके इन्वेस्टर को भी लागू हुआ. तो कई लोगों ने वो प्ली ली थी, लेकिन वो उनके गले नहीं उतरी, वो लागू है. उसको अभी डिस्प्यूट करके कोई फायदा नहीं. ओके सर. सर उनका एक क्वेश्चन और है कि आर नॉट द नोटिसेस इशूड बाय सेबी टू इन्वेस्टर इज वॉइड एब इनिशियो? नहीं, वो आपका कहना सही है, वाइड होता था, लेकिन सेबी इज गाइडेड बाय ये सेबी एक्ट 1992 पार्लियामेंट. ये अपने आप में कोर्ट है. ये सेबी all the proceedings, let me tell you now, all the proceedings before the adjudicating officers are semi-judicial, and you are talking to as a वो judicial officer है, उसके साथ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं. उसके साथ मैंने तो हियरिंग करी है 70-80 केस में, ऑनलाइन हियरिंग करी है. उनके साथ बहुत डिसिप्लिन में जैसे कोर्ट में करते हैं वैसे ही बात करनी होती है और सबमिशन देना होता है. सारी प्रोसीडिंग सेमी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, नंबर 1. नंबर 2, टाइम बारिंग की जो आप बोल रहे हैं, सेबी एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू सेबी. ये बात सबसे पहला यही प्ली था हमारा, जब भी हम लोगों ने रिप्लाई दी नोटिस की, यही हमारा सबसे पहला पॉइंट था. सेट में भी यही पॉइंट था. बाद में उन लोगों ने इस पॉइंट को काट दिया. उन्होंने बता दिया कि साहब हमको 7 साल की क्यों लेट हुई है. पहला तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं करता. दूसरी चीज, 3-4 केसेस जो सेट के डिसीजन थे जिसमें इन्होंने लेट इनिशिएशन लिया था, उसमें सेट ने रूलिंग दिया कि नहीं, ये वी डोंट अलाउ. 3 और 4 केसेस दे हैव
SET has told ki belated this action will not be allowed, but it didn't go down well with them. What their SEBI is taking the plea कि पहले हमने 59 एंटिटीज पे केस किया, वो 5 करोड़ का फिल्टर था, 5 करोड़ का प्रॉफिट लॉस का फिल्टर था, उसमें 59 एंटिटीज थी. दिस एक्शन वाज टेकन बाय अस right in September 2015 itself. Yes, then they increased the scope by reducing the filter from 5 crore to 1 crore to 50 lakh to 2 lakh to 1 lakh, and then they 456 entities were issued the notice. उनका जो चला करते कराते फिर then they came across everybody. So that plea is not working with them now. समझ गए क्या रामोतार जी? Is it clear to you, sir? नमस्कार दूध जी, पहचाने क्या? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को. खाना नहीं पहचाना है तो फिर मैं पहचाना है. हाँ, बोलो. बोलो बोलो बोलो. थे ही बोलिया कि यो इन्हें टाइम बारिंग बोल कर चला सका के. नहीं टाइम बारिंग को नहीं बोले, हम बोलो PFUTP 2003 हाँ जिसमें ये नोटिस इश्यूज हुई है. हाँ, ये एप्लीकेबल है क्या इन्वेस्टर के ऊपर? हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब हम लोगों ने रिप्लाई किया और सेट में भी गए, वहां भी हम लोगों ने बोला कि ये जब 2002 में था, 2003 वाज एप्लीकेबल टू इंटरमीडिएट्स ओनली, नॉट टू द इन्वेस्टर्स. It was amended subsequently and it became applicable to everybody. 2019 में एप्लीकेबल हुआ तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज में किसी को पनिशमेंट कर सकते हैं क्या? वो कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन कर नहीं सकते ना. कानून के तो खिलाफ कर रहे हैं. नहीं, पर जब हम लोग ये सब प्ली लेके सेट में गए तो सेट ये बोल रहे हैं ना कि वो पॉइंट अलग है. आपका पॉइंट है कि आपने इस तरह का ये जो मीटिंग ऑफ माइंड और जो भी आप तो देखे हैं, सो मेनी आर्गुमेंट्स, एटलीस्ट 20-30 पेजेस आर देयर, उसको डिस्कस करेंगे तो यहाँ बहुत समय लगेगा. मान नहीं रहा वो कहानी अलग है. हाँ, जो हो रहा है वो अलग है. हाँ, तो फिर ठीक है. जिसको ये लगता है वो he should not avail. A person who thinks that he can win on this point, he should not avail. नहीं ऐसा कोई बात नहीं है. अब ये किसी को ऑर्डर जीत नहीं देंगे तो करेंगे क्या? एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है. आप नहीं करो तो 5 लाख लेंगे, करो तो 1 लाख लेंगे, तो आप करेंगे क्या? तो वो एक अलग कहानी है. हाँ. लेकिन जो चीज ये है, काम तो सारा गलत ही हो रहा है ना सर. आप जो इतने बड़े सेबी के NSE के चेयरमैन रहे, उसमें दूसरा पॉइंट आ गया. PFAT के अलावा ये बात जो बोल रहे हैं ना कि फ्रॉडुलेंट नहीं है, मान लीजिए 2003 एप्लीकेबल नहीं है एंड द ट्रेड इज नॉट ट्रीटेड एज फ्रॉडुलेंट, बट देन दे आर सेइंग ह्यूमन प्रिपोंडरेंस, नेचुरल ह्यूमन प्रिपोंडरेंस, कि विदिन ए फ्यू मिनट्स और विदिन ए फ्यू सेकेंड्स विद ए वाइड मार्जिन ऑफ डिफरेंस ऑफ द प्राइस यू हैव रिवर्स्ड. सर बलराम गर्ग में इसी डिसीजन को उल्टा किया गया है. बलराम गर्ग का जो ऑर्डर हुआ ना सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, उसमें 20 लाख रुपए की सेट ने पेनल्टी लगाई थी. अच्छा, और उसको उल्टा कर दिया. ऑलरेडी सेबी किशोर और मेरा का राखी ट्रेडिंग का डिसीजन उल्टा हो चुका है. अच्छा. तो ये सब सारे आर्गुमेंट्स होते हैं, लेकिन जो हो रहा है, हम लोगों को ऐसी सिचुएशन में सेबी ने फंसा रखा है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है. नहीं, 5 लाख का डर दिखा के सबसे पैसा मांग रहे हैं. ये तो हो रहा है. दिस इज व्हाट हैपनिंग, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग. राइट. मैंने तो देखी है रामोतार जी, जब ये बातें उठी और मेरे पास करीब 200-300 केसेस आए, तो मैंने तो बोला था कि क्लास एक्शन सूट करो. अकेला आदमी सकेगा नहीं, क्लास एक्शन सूट हो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. तो मेरे को वकील बोला कि देखिए आपका एप्लीकेशन तो इंडिविजुअली लगेगा, सुनवाई हो सकती है ज्वाइंट, तो खर्चा तो आपका इंडिविजुअल लग जाएगा. देयर कैन बी ए हियरिंग ऑफ से 100 or 2 as you have seen in the 55 bunches of the hearing on 22nd of August. यही हो रहा है ना. सेबी तो किसी का बात सुनो, तरुण जी किसी का बात बोलने नहीं देते हैं. नहीं, आपने तो बहुत सारी RTI भी लगाई थी, उसमें भी तो RTI का वो गुपचुप जवाब दे दिया. फिर RTI की अपने एप्लीकेशन RTI में बोला है कि हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है आपको चोर साबित करने के लिए. नहीं, पर फिर अपने उसमें भी तो गए थे ना, अपील करी थी RTI के अगेंस्ट भी, तो वो बोल दिया जितना जवाब दिया ठीक. RTI के सिंपल अपील के अंदर तो कुछ बोलते ही नहीं है, और बाद वाले अपील के अंदर वो लोग जवाब देते हैं. तो उन्होंने लिख के दिया है कि सेबी डज नॉट हैव ए सिंगल एविडेंस टू प्रूव एनी क्लाइंट गिल्टी. नहीं, हाँ, यहाँ पर आप राखी ट्रेडिंग को मेरे पास सैकड़ों RTI का रामोतार जी वी मेक इट ए पर्सनल डिस्कशन. देन राखी ट्रेडिंग का अगर आप बोलो तो मैं अभी पढ़ दूं
पूरा उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो ये बोल रहा है कि इवन इफ देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस, कोर्ट खुद एडमिट कर रहा है कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन जो सारी परिस्थितियां हैं, अगर ऑर्गेनाइजर बोले और टाइम हो तो आई हैव गॉट इट एंड आई कैन रीड आउट। नहीं, वो रीड आउट क्या हो तो सबको मालूम ही है सर। आपके ट्रेडिंग में सस्पिशन के आधार पे सबको पनिशमेंट करा है, लेकिन ये सस्पिशन के आधार पे ये कब तक काम चलेगा? और जिनके इन्वेस्टर्स के ऊपर ही सारा मैनेजमेंट का ड्यूटी दिया गया था क्या सेबी ने? जो LEF स्कीम बनाया था तो उसमें साफ साफ लिखना चाहिए ना कि जो जिम्मेवारी इन्वेस्टर्स की है, BSE और ब्रोकर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वहां तो जिम्मेदारी दी इन्होंने BSE और ब्रोकर्स को, और यहाँ पैसा ले रहे हैं इनसे। जिनके पास जिम्मेदारी दी वहां तो 5 रुपया नहीं लिया। अरे रामोताड़ जी, आपने जो ये बात बोली है, ऑलरेडी 125 ब्रोकर्स को 15 HB का नोटिस जारी हो चुका है। लेकिन उसका भी मैं डिफेंड कर रहा हूँ, उसी मैटर को लेकर नहीं, उस मैटर्स को भी मैं डिफेंड कर रहा हूँ। उसमें भी BSE हैड द ऑप्शन, रिवर्सल ट्रेड का पता जो चल रहा है ना, वो खाली BSE को पता चल रहा है, ना ब्रोकर जानता है ना इन्वेस्टर जानता है। हाँ, वो ऑब्जेक्शन होगा, वो उसमें भी चार ब्रोकरों को मैंने रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, एंड आई हैव डिफेंडेड देम, 150 रुपए का सबमिशन दिया है कि ये जो काम था वो BSE को मालूम था। BSE was the regulator and they had the duty to prevent all these things. उनका रिवर्सल ट्रेड मैकेनिज्म चालू हुआ 14/3/2016 में। वॉइस रिकॉर्डिंग उन्होंने लागू की 2017 में। ब्रोकर्स को पनिशमेंट का बनाया 2018 में। उस टाइम पर भी वो इन्वेस्टर्स को पनिशमेंट करना भूल गए। 2018 में जो कानून बनाया उसमें बोला कि NSE विल चार्ज 15% ऑफ द वॉल्यूम टू ब्रोकर एंड BSE विल चार्ज 100%। तो इन्वेस्टर के लिए तो कानून ही नहीं बनाया, और यहाँ तमाशा बना रखा है कि यहाँ सब आदमी को रजिस्ट्रेशन लो, पेमेंट करो। नहीं, ये जो अभी आपने तो बोला, ये सब क्या हो रहा है? ये एक मिनट, जब कानून ही किसी चीज के लिए नहीं है तो पनिशमेंट क्या चीज का? अच्छा, पहले तो कानून बनाइए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए, उसके बाद में पनिशमेंट लागू करिए। To cut short the discussion, Ramotarji, when you are saying that there is a gag order of reversing the acquitting of FUTP 2003, better for the benefit of all the audience, you should upload to the View Exchange and they will share it with the audience. Then they can take a call. Yes, it should be taken. Call must be taken, sir. Investor has to fight out their case. Thank you. Now, Rishabh Goenka has asked a question in the chat box. Mr. Rishabh Goenka has a question in the chat box. He wants to ask from annexure 1.5. Yes, Mr. Goenka, go ahead. सर, जैसे मेरे 3 फाइल में आया है, तो एक फाइल में मैंने क्या रिप्लाई दिया था शो कॉज नोटिस का। नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि आप तो annexure का 0.5 पूछना चाह रहे हैं। हाँ, उसी में मारे annexure 1 का 0.5, एक्शन 1 का 0.5। हाँ, एप्लीकेशन का, ठीक है, समझ गया। तो स्टेज एट विच पेंडिंग, सॉरी आप बोल रहे हैं ना annexure 1 का पॉइंट नंबर 5, स्टेज एट विच पेंडिंग। यस सर। हाँ, तो बोलिए क्या क्वेरी है। उसमें जैसे 3 फाइल में आया हुआ है, हाँ, और एक फाइल में शो कॉज नोटिस का मैंने रिप्लाई दिया था, क्योंकि उस समय तक एक ही फाइल में आया था। ठीक है, तो उसमें जैसे मैंने रिप्लाई दे दिया, तो इसमें मैं क्या लिखूं? एट द एडजुडिकेशन स्टेज आप लिखिए कि स्टेज एट विच पेंडिंग बिफोर द एडजुडिकेशन ऑफिसर। आपने रिप्लाई दे दिया तो अब वो एडजुडिकेशन ऑफिस के मैटर बन गया, तो वहां लिखिए कि एडजुडिकेशन ऑफिसर या एडजुडिकेशन स्टेज, बिफोर द एडजुडिकेशन ऑफिसर। यस, ओके सर। और सर, कौन सा स्टैम्प ड्यूटी लगेगा रुपये का? हाँ, स्टाम्प तो ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। हाँ, इसमें भी एक क्वेरी है, मैंने क्वेरी करी थी, वो 200 रुपए का बोल रहे हैं बॉम्बे के हिसाब से। हम लोग कलकत्ते में 100 का करते थे, लेकिन कई लोगों 100 का भी लगा रहे हैं। 100 का 200 का मिलता नहीं है, तो 100 का 2 लगाने से भी काम हो जाता है। तो मैंने अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया कि भाई 100 रुपए के लिए सारी प्रोसीडिंग बाद में ऑब्जेक्शन हो जाएगी तो कोई फायदा नहीं है, तो आप 100 के 2 स्टाम्प लगा के चलो। 200 के 2 ठो। हाँ, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। ओके सर, थैंक यू सर। Okay, thank you, Rishabh. Question answers have been answered as far as Yes, DOG is concerned. तो आप प्लीज उनको एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स बोलिए। हाँ जी सर, जरूर। Thank you so much, Vinod Goldi. Sir, it's a pleasure to attend your session. It's a very interactive session, and the discussions are
unlimited. We can continue if we want. We can continue to a very long time. But as we have a shortage of time, we have cut it short and request you to allow us. We request you to allow us a vote of thanks to you for attending the session and giving us the knowledge on Sebi settlement scheme, sir. Thank you very much, and I thank you for you to invite me for such a live discussion. And of course, as you told, ki time is short, or let me tell you this, as you have seen, I am in the line for 43 years and at least attended 2000 webinar seminars of various types, and now we are always running on time. I should congratulate you that you have finished before time. And moreover, so because generally I would advise the advisors to have a questions in advance so that we can eliminate the common type of repetitive questions. Now, if you see, everybody will ask a question which is already answered. Correct. That is where we can organize, and we should. Okay, Thank you sir. very much. Thank Okay, you. thank We'll you. take care of this same. Thank you Thank so much, sir, for coming out Thank of your you busy so much. schedule. Thank you, sir. Thank you, sir. My dear friends, now Avinash ji is back with us. And Avinash ji, I would request you to continue our topic, tax audit. Yes, sir. Yes, sir. Welcome back, sir. Okay. Sir, I think we have just completed the two new clauses of 30C and 44, and then I would like to come on the parts of the various mistakes which have been committed by the tax auditors. So by looking into few things, just be aware about few things, and then we can always put it in a different way. Sir, as far as this tax audit is concerned, so the first what we have to decide is that we have to fill either 3CA or we have to fill 3CB. So either of the form has to be filled by a tax auditor. So 3CA is to be filled when the books are audited under other acts. And now as a tax auditor, I am auditing the same books for the tax audit perspective. So then we have to fill form 3CA. If the books are not audited by another auditor or by any auditor in any other act like partnership, firm, proprietorship, or any other entity which is not liable to be audited under any of the provisions of any law, then we have to file form 3CB. I have seen that many people make mistakes. Instead of 3CA, they file 3CB or a vice versa case. So friends, please file the correct form. If it is a case of a company whose audit is already been completed either by you or by any other person, then it is 3CA. In case of a partnership firm or a proprietorship, it is always 3CB. In case of a LLP, if it is liable to be audited under LLP Act, like turnover exceeds 40 lakhs or so, and the turnover and the capital exceeds 50 lakhs and other criteria, then it is 3CA. Otherwise, it will be 3CB. So that is what we need to take care when we are filing the either of the form. Then let us go to our main form that we have to file in all the cases is form 3CD. In this 3CD, the part A consists of 8 clauses, and these 8 clauses are like general information about the SSC. So 1, 2, 3 is about name, address, PAN number of the SSC. Number 4 is the clause which is important, which says that you have to give the details of all the GST numbers, all the custom numbers, all excise, VAT, service tax, or any other indirect tax registration like luxury tax or any other registration what the SSC might have with respect to the indirect tax. So that detail has to be reported in clause number 4 of the form 3CD. Now my question, which is to you all, that how will you come to know about these registration number? Anybody who can tell me कि अब SSC के पास कितने रजिस्ट्रेशन है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? आप बताएं. कौन? Anybody who can tell me that how you will come to know about
how many registration will the SSC have? Hello, can anybody tell me? सर देखिए, अगर आप नहीं सुन रहे हैं और आप नहीं सुनना चाहते तो आई फील कि हमें सेशन क्लोज कर देना चाहिए, बट नाउ लेट अस मेक इट मोर इंटरेक्टिव एंड इट इज अ व्यूज एक्सचेंज। यस सर प्लीज। प्रतीक जी आप बता सकते हैं कि आपको हाउ विल यू कम टू नो दैट हाउ मेनी रजिस्ट्रेशन विल द एसएससी हैव फॉर whom you are doing a tax audit? कैसे पता चलेगा आपको? राहुल मोदी जी कह रहे हैं पैन ऑफ एन एसएससी मे बी यूज्ड टू गेट ऑल जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द जीएसटी वेबसाइट। एब्सोल्युटली करेक्ट। जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो वहां से आ जाएगा सर। बाकी रजिस्ट्रेशन यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव ओनली जीएसटी, यू आर सपोज्ड टू गिव custom registration, you are supposed to give VAT registration, you are supposed to give excise registration, you are supposed to give any other luxury tax or any other indirect tax registration. So how will you tax and everything is welcome ना sir? Sorry sir, P-tax ये सब भी तो आएगा। हाँ तो कहाँ से पता चलेगा? How will you come to know? So हिमांशु जी कह रहे हैं we will rely on the work of last auditor। तो सर लास्ट ऑडिटर उसका मैं था और मैं इतना इग्नोरेंट था कि मैंने कुछ भी नहीं डाला। अब आप बताओ क्या करोगे? करंट ईयर ऑडिटर तो सर आप हो। तो साहू साहब कह रहे हैं फ्रॉम द क्लाइंट इटसेल्फ टू बी कलेक्टेड। सो साहू साहब कैसे कहोगे आप? कैसे लोगे उससे ये? सो Sahu Saab is absolutely correct. Now we have to write to the client to provide me all the details and let him give a declaration, a management representation that I have these registrations. अगर मैनेजमेंट आपको नहीं बताती तो आप अपना नॉर्मल चेक्स लगाएं जैसे पैन नंबर से हमने निकाले। अदरवाइज देयर हैज टू बी अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर फ्रॉम द क्लाइंट इटसेल्फ स्टेटिंग कि मेरे ये रजिस्ट्रेशंस हैं। या आप इसको नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन ले लें कि आई डू नॉट हैव एनी अदर रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट व्हाट हैव बीन मेंशन्ड इन क्लॉज नंबर 4। तो उससे भी आप एक जो है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी ले सकते हैं। अदरवाइज मैनेजमेंट हैज टू टेल यू कि उसके कौन कौन से रजिस्ट्रेशंस हैं और उसके बेसिस पे आप ये क्लॉज नंबर 4 में डिटेल्स भर के दे दें। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने से वैलिडिटी भी चेक हो जाएगी सर? सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल को था और 31 मार्च को नहीं है, चाहे वो एक्सपायर हो गया, चाहे वो सरेंडर हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, उस केस के अंदर आपको जो है, आपको अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी भी दिन आपका रजिस्ट्रेशन था तो आपको देना है। सर आपका जो ये कॉलम है कि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन, सर नहीं देना। Shops and establishment is not an indirect tax, and so this registration number is not to be given here. But yes, for professional tax also this is not an indirect tax, so hence this registration number is also not required to be given here. So professional tax and shops and establishment का registration नहीं देना, but जो भी indirect tax के registrations हैं वो registration आपको clause number 4 में देने हैं। So that is what you have to give those registration. तो ये आप इसमें करेक्ट कर लें और इसको आप ठीक से दे दें। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आप उसका असेसमेंट प्रीवियस ईयर बताएं, असेसमेंट ईयर बताएं, वो आप दे देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देन इसके बाद आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज पूछता है कि आप किस क्लॉज के अंदर आप उसका टैक्स ऑडिट कर रहे हैं। ABCDE जो मैंने अभी आपको शुरू में बताई, तो उसके अंदर आप यू विल सिलेक्ट वन ऑफ द क्लॉज जिसमें भी आप कर रहे हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ जाएं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लॉज आती है वो पार्ट बी में शुरू होती है, विच इज एप्लीकेबल फॉर अ पार्टनरशिप फर्म और AOP और BOI। ये क्लॉज हमारी क्या कहती है? ये कहती है कि क्या ड्यूरिंग द ईयर जितने भी हमारे पार्टनर्स थे पार्टनरशिप फर्म के, उनकी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज हुआ? क्या कोई नया पार्टनर ऐड हुआ? क्या कोई किसी की डेथ हो गई या कोई रिटायर हुआ? अगर वो हुआ तो उसकी पूरी डिटेल जो है मुझे इस क्लॉज में उसको देनी है,
जहां पे मैं उसमें देता हूं कि भाई ये मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज ऑन 31 मार्च है, और ड्यूरिंग द ईयर ये मेरी चेंज हुई, ये मेरा एडिशन हुआ, ये मेरा डेथ हुई, या ये मेरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर हुआ। तो जो भी कुछ ड्यूरिंग द ईयर होगा, दैट आई हैव टू मेंशन इट वेरी कैटेगोरिकली इन दिस क्लॉज नंबर 8 जो पार्ट बी की पहली क्लॉज है, उसमें मुझे ये 3CD देना है। बहुत सारे एसएससीज जो हैं यहाँ पे जो है डिस्क्लोज करना नहीं चाहते, या टैक्स ऑडिटर उसको डिस्क्लोज करने से भूल जाता है, तो प्लीज इसको आप पार्टनरशिप फर्म के केस में आपको 31 मार्च की तो देनी ही देनी है, बट अगर ड्यूरिंग द ईयर भी कोई चेंज हुआ है तो दैट आल्सो नीड्स टू बी रिपोर्टेड इन दिस क्लॉज। then the next important clause comes in the tax audit where we generally tend to make mistake is clause number 13. So clause number 13 says that we have to give the details about the nature of accounting, कि वो mercantile है या cash है, और उसके बाद अगला पूछता है is there any change in the accounting, कि कहीं आपने mercantile से cash में कर ली या cash से mercantile में कर ली, आपको yes और no में जवाब देना है, और आंसर अगर yes है कि yes there is a change, then you have to give the impact of the same on the profitability. ये तीन चीजें तो हम देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ABC हम देते हैं। But next D, E, F are more important clauses which we tend to forget or tend to not give disclosure in that. This is in relation to ICDS, Income Computation and Disclosure Standards में जो डिटेल है वो हमें यहाँ पे देनी होती है। सो इन ICDS में हमें क्लॉज नंबर D13D हमें ये बोलता है कि क्या एसएससी के केस में ICDS के कारण क्या कोई एडजस्टमेंट होनी है, दैट इज अंडर सेक्शन 145 सबसेक्शन 2, जहाँ पे ICDS नोटिफाइड है, क्या उसके अंदर आपकी कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। इफ आंसर इज यस, तो हमें ई कॉलम में जो है 13E के अंदर उसकी डिटेल देनी है ICDS वाइज, और अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो नो कर देना है। और उसके बाद अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर को कोई भी चीज बताना चाहते हैं, कोई भी चीज डिस्क्लोज करना चाहते हैं इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर ICDS, so that needs to be reported in column 13F in relation to each and every ICDS. ये आपको 13DEF, my request is कि आप इसको प्लीज ध्यान से इसको पढ़ लें, देख लें, और इसके अंदर आपने जो भी रिपोर्टिंग करनी है वो रिपोर्टिंग आपको प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी, that you need to give that particular thing in the in this clause number 13EF, that what you can do in the 13DEF report. Then we come to the next important clause with respect to the employee contribution towards PF and ESI. So that is also an important clause where we need to give all the details of the only employee contribution. Employer contribution not to be reported here. Plus, if there is any EDLSI charges or any other charges which have been paid over and above this employee contribution, then this also should not be reported in this column. Only the amount which have been deducted from the employee towards PF, ESI or any other labor development, labor welfare fund. So those reports, those things needs to be reported in this clause of PF, ESI, employee contribution to PF, ESI. Please take the copy of the challans for your documentation in case you are filling this form, because you need to have an adequate proof about the actual date of payment. At due date also, you please write it carefully. That is also an important part. But actual date of payment should be supported by the payment challan, and that payment challan should be available in your file. So please take those things which you can mention it in your in this clause. Then the clause comes with the depreciation, computation of depreciation. I think everybody is doing it perfectly, so there is no issues in this. The only request is that you have to give details in this clause about the additions made during the year. So assets which have been put to use during the year in 180 days or more than 180 days. I have seen that many people are giving a consolidated figure instead of individual figures of date of asset to use. Everybody, many people are giving the consolidated figure of one less than 180 days, one more than 180 days.
My request is please do not give like that. Now you can always export and import these transactions in the tax audit format. So please give the details with the exact date, that or which date this particular asset have been put to use. So do not give the consolidated detail, but give the individual detail here in this particular column about depreciation. So that's a mistake what we found, what we generally see. So please be careful about that particular thing. Then comes the next important clause with respect to TDS, or whether it is disallowance under section 40AI and 40AIA. So these two are important disallowances what as a tax auditor we have to report. Corresponding to these disallowances, there is a clause on TDS also, where we have to report that how many TAN numbers the SSC have and what are the date of filing of returns of the SSC, and then we have to report how much is the amount on which TDS have not been deducted, TDS deducted but not deposited, or TDS short deducted. So those are also to be referred there. Now the problem is that if it is an international transaction, then there is no problem. The amount shown in the TDS schedule and the amount to be shown in the 40AI is same. So अगर मैंने 2 लाख रुपए पे TDS नहीं काटा, 2 लाख का 2 लाख क्या हो जाता है, मेरा disallow हो जाता है. However, in case of a domestic transaction which is disallowed under 40AIA, only 30% expenditure is disallowed. So यहाँ पे आपको जब आप TDS के शेड्यूल में जाएंगे, so you have to write the entire expenditure, और जब आप 40AIA की बात करेंगे तो only 30% of the expenditure should be written here because it is the amount which is disallowable or which is not allowable. So ये एक थोड़ा सा देख के दोनों कॉलम को आप भरिएगा, this is important. एक और मेजर प्रॉब्लम हमारे एसएससीज या टैक्स ऑडिटर फेस कर रहे हैं. Under this clause only, they said, is there any other income, which is there is a column of any other income, but हम उसमें नीचे any other income तो देख लेते हैं जहाँ पे हम उसके सैलरी इनकम, रेंटल इनकम, उसके कैपिटल गेन इनकम या अदर सोर्स इनकम यहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं. बट हम ऊपर का मेन क्लॉज भूल जाते हैं. ऊपर के मेन क्लॉज में लिखा हुआ है इफ देयर इज एनी इनकम व्हिच इज नॉट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट. सो अगर उस एसएससी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम या अदर सोर्सेज की इनकम ऑलरेडी क्रेडिटेड है, तो एज अ टैक्स ऑडिटर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एनी ट्रांजैक्शन अंडर एनी अदर इनकम नॉट क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट. तो यहाँ पे हमें कुछ चीज की देने की कोई आवश्यकता नहीं है. बट अगर वो क्रेडिट नहीं है तो मुझे यहाँ पे देना पड़ सकता है, और फिर मैं जब उसकी रिटर्न भरेगा तो उस रिटर्न में उसको एडुकेटली डिस्क्लोज करते हुए वो जो है इसकी क्या करेगा, डिडक्शन क्लेम करेगा अंडर दी बीपी शेड्यूल. तो वो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग उसको चेंज करना है. एक सीपीसी से आजकल बहुत सारी एडिशनें इस कारण से आ रही है क्योंकि टैक्स ऑडिटर ने यहाँ पे दे दी, तो वो डबल एडिशन हो जा रही है. तो उसको आप उसको प्रॉपरली डेट करेंगे. अगर वो क्रेडिटेड है तो यहाँ पे देने की कोई आवश्यकता नहीं है. There is no need to give this detail here. Then there is an another important para what one has to report is about clause 31. This pertains to section 269 SS, 269T and 269 ST. तो ये 3 सेक्शन के लिए रिपोर्टिंग है क्लॉज नंबर 31 में, that if any person is accepted any advance or loan or specified transaction under section 269 SS and T exceeding rupees 20,000 either by way of an account pay check or otherwise. So दोनों ट्रांजेक्शन, चाहे उसने किसी भी तरह से एडवांस लिया हो, चाहे किसी भी तरह से उसने लोन लिया हो, चाहे उसने किसी भी तरह की कोई स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन करी हो, which is generally a purchase and sale of the immovable property which have been defined under section 269 SS, that has to be reported. और उसके बाद चाहे वो बैंक से हो, चाहे वो चेक से हो या नहीं हो, आपको सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे रिपोर्ट करनी है. और उसके एडुकेट कॉलम में फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि whether it is by an account pay check or otherwise by cash or by adjustment etc. So that you need to draw in a drop down menu. You should select about it कि 269 SS में आप कैसे करेंगे.
Similarly, अगर ये पैसा आपने वापस किया है during the year, so that transaction is also reported under 31 under section 269T और 269T के अंदर repayment of all repayments has to be reported whether through an account pay check or not, that is immaterial. तो हमें वहां पे रिपोर्ट करनी है पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन अंडर 269 SS एंड 269 T। सिमिलरली इसी क्लॉज में 269 ST का भी उन्होंने कॉलम दिया। सो अगर किसी एसएससी ने 269 ST का वायलेशन किया है और 269 ST में कोई कैश रिसीव किया है एक्सीडिंग ₹2 लाख अगेंस्ट अ सिंगल बिल और अगेंस्ट सिंगल इवेंट, जो भी 269 ST जिसपे ऊपर अप्लाई करता है, so that is also required to be reported by the tax auditor under clause 31, which is very very important what one has to see. ये clause भी हमारे को देनी है। Then there are some clauses like which is replica like 40A3 कि अगर आपने उसकी कैश बुक को जो है ऑडिट किया या उसकी स्क्रूटनी करी और उस कैश बुक की स्क्रूटनी में इफ यू फाउंड आउट एनी एक्सपेंडिचर इन कैश exceeding ₹10,000 either for capital or for revenue expenditure, that needs to be reported under the particular clause of 40A3 or 40A3A. So that expenditure needs to be reported there. Then there is a related party disclosure transaction where you need to report that what are the related parties with whom the assessee have made the transaction and what are the nature and quantum of those expenditure, which we need to report under the head 40A2 section. My request is only the debit side, which is an expenditure entries to be reported. Credit side, sale side is not to be reported. I have seen many tax audit report where the sale is being made to a related party covered under 40A2, but this has been reported by the tax auditor in the tax audit that this is the amount of sale that is made. Sale side not to be reported, only expenditure side needs to be reported. So that's another common mistake what we used to have in the tax audit report. Then next very very important clause where we make mistake is with respect to partnership firm. So under this partnership firm there is a section 40B where the remuneration and interest on capital paid to the partner is disallowed with a certain guidelines. So if any interest is paid exceeding ₹12%, that is disallowed, or remuneration paid. हार लग रहा है, हम 12 का 12 दिन मेहनत की है. So if the remuneration is paid which is in excess of 60% of the profit before remuneration or first 3 lakh 90% of the profit as the limit specified, then that excess amount is inadmissible. So यहाँ पे हमारे टैक्स ऑडिटर्स जो मैक्सिमम गलती करते हैं उसमें वो पूछता है कि आपने किस नेचर की पेमेंट करी, आपने इंटरेस्ट दिया है या आपने जो है रेम्यूनरेशन दिया है, और वो कौन से सेक्शन में क्लॉज में आता है, 40B में आता है। फिर वो पूछता है अमाउंट एडमिसिबल कि कितना अमाउंट अलाउड है, एडमिसिबल है। उससे अगला कॉलम होता है अमाउंट इनएडमिसिबल। So what we used to do, या हमारे आर्टिकल भर देते हैं, जितना एडमिसिबल में डालते हैं उतना ही इनएडमिसिबल में भी डाल देते हैं। So that is not to be reported like this. अगर एक एसएससी ने कोई फर्म ने पार्टनर्स को 20 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन दिया है और उस 20 लाख में से 18 लाख रुपए अगर अलाउड है तो आप एडमिसिबल में 18 लाख लिखें, इनएडमिसिबल में 2 लाख लिखें, पूरा का पूरा 20 लाख अलाउड है तो आप एडमिसिबल में 20 लाख लिखें, इन एडमिसिबल में 0 लिखें। पूरा का पूरा डिसअलाउड है क्योंकि वो पार्टनर जो है वो वर्किंग पार्टनर नहीं है। सो एडमिसिबल 0, एवरीथिंग इज इनएडमिसिबल। सो ये क्लॉज में सबसे ज्यादा हम लोग गलती करते हैं भरते समय कि जितना एडमिसिबल में डालते हैं उतना ही एडमिसिबल में डाल के आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, सो इसको हम केयरफुली करें क्योंकि बाद में जब रिटर्न प्रोसेस होती है एसएससी की तो वहां पे ये चीज बड़ी दिक्कत करती है और वो सीपीसी वाले इसको क्या कर देते हैं, दे यूज टू disallow that particular amount which you have written as inadmissible. Then there are two important clauses which we have to fulfill. One is conversion of capital asset into stock in trade and another is conversion of stock in trade into capital asset. So इन दोनों का disclosure मुझे अपने tax audit report में देना है specific column में। So इसमें जो भी उसके law के हिसाब से जो आए वो आपको उसमें properly disclose कर दीजिए, that is important.
Then there is one important part, what as a tax auditor I have to fill is amount chargeable to tax under section 56(2)(10). And there is one more important clause where I have to report, is there any amount which is chargeable under 43CA or 50C. So दो ट्रांजेक्शन मुझे जो है वहां पे देनी है। तो मान लीजिए सरोज जी, आपके एसएससी ने एक कोई फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदी जिसका सर्कल रेट 10 करोड़ रुपए था और उसने वो 8 करोड़ में खरीदी। During the year, there is this transaction that the SSC have purchased a factory building or purchased a guest house or purchased any immovable property, and the same is the circle rate is 10 crore rupees, but it have been purchased in 8 crore rupees. तो सर ये 2 करोड़ रुपए का क्या करोगे सर आप? क्या आप इसको कहीं डिस्क्लोज करना चाहोगे या नहीं चाहोगे सरोज जी? म्यूट पे हो सर आप। डेफिनेटली करना पड़ेगा सर। तो ये सर, you know that 56(2)(10) says that if you have purchased anything below the circle rate and the difference between the circle rate and the transaction value exceeds rupees 50,000 rupees, then this is taxable under section 56(2)(10. तो आपको ये 56(2)(10) में रिपोर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए जिसने ये जो है खरीदा वो पल्लवी जी का क्लाइंट था, तो पल्लवी जी को क्योंकि ये आपने 50C वैल्यू से कम में खरीद लिया तो आपको 50C लगना है, सॉरी आपने कम में बेच दिया तो आपको 50C लगना है। तो दैट यू हैव टू रिपोर्ट इन द बुक्स ऑफ योर एसएससी दैट दिस इज अमाउंट व्हिच हैव बीन कवर्ड अंडर 50C। तो ये बिलो 50C वैल्यू पे है। तो दोनों टैक्स ऑडिटर को, खरीदने वाले के टैक्स ऑडिटर को भी और बेचने वाले के भी टैक्स ऑडिटर को, दोनों चीजें उसको प्रॉपरली रिपोर्ट करनी है। अब मान लीजिए कोई ऐसा एसएससी आ गया जिसने अपना घर खरीद बेच लिया। So there is no business assets, there is no immovable property which is related to business which have been sold or purchased by the SSC, and the same is not at all dealt with in the books of accounts. So मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने अपनी फर्म का ऑडिट कराना है और मैंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई मान लीजिए अपने हाउस प्रॉपर्टी या कोई और प्रॉपर्टी बिलो सर्कल रेट खरीद ली या बेच दी, तो क्या फिर भी आपको ये डिस्क्लोज करना है अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में? आंसर इज नो। Unless and until this property what I have purchased form part of my books of accounts, form part of my balance sheet or P&L account, till that time I am not required to, or I am not supposed to put this thing in the tax audit report of the person. But if somebody chooses, yes, it is there, so they may also report it. So that is on the individual tax auditor, but normally people are not reporting it. That is good enough, so that's not a problem. So that one should look into account when they are reporting for 50C or 56(2)(10. So ये दोनों चीजों के बारे में आप उसको ध्यान से उसको रिपोर्ट करें. Then there was a second last column which is talking about the ratio analysis. So this is also an important clause which we have to deal with it. So normally what people used to do is they used to calculate the current year ratio based on the current year P&L account correctly. There is no doubt about it. But when it comes to the previous year, they simply write the current year figure of the last year tax audit. Or the software is like that they will import the last year tax audit figure here. But don't do that. If there is any regrouping which have been done. So for example, in one of the case, my SSC is a trader of certain goods, and they also provide very small amount of after sales service to the client. So they classified after sales service in the last year as other income. But during the year, they have substantially expanded, and now after sales service and the sale of goods both become 50-50. So for the current year, the service income is also my sales, part of my sales. So, but my last year figure is not part of the sales. So hence I have to do a regrouping for the last year also. So there are school of thought which says that previous year figure should match with the earlier year. Answer is no, not required. So each year you have to calculate the current year, and on the same basis you have to calculate the previous year figures also in the ratio analysis form. This is very important. One has to
give the correct details there in this particular clause. So ये clause में आप proper disclosure जो है आप इसमें दें. Then there is one issue which is there with most of the tax auditor, which is with respect to the gratuity payment. Whether gratuity is covered under 40A7 or it is covered under 43B. So there is always that people used to do a double reporting. वो 43B में भी disallow कर देते हैं और 40A7 में भी disallow कर देते हैं. So for that, I request all my professional colleagues to read section 40A7 vis-a-vis 43B for gratuity. So 43B says that if you are making payment to LIC or any other insurance company or any gratuity trust, for making payment of gratuity, or trust has to be approved by CIT, that I am not declining this, right? So if any SSC is making payment to an insurance company or to a government agency or to an approved gratuity trust, then this is subject to 43B, meaning thereby कि 31st March में जितना भी outstanding है वो क्या होना चाहिए, till the date of filing of return मेरा जो है पे हो गया, तो that is an allowable deduction under section 43B. But अगर मेरे SSC ने किसी तरह की कोई ट्रस्ट नहीं बना रखी, मेरे एसएससी ने किसी इंश्योरेंस कंपनी से कोई प्लान नहीं ले रखा, या मेरे एसएससी ने कोई गवर्नमेंट एजेंसी की कोई मेंबरशिप नहीं ले रखी फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, वो क्या करता है, वो सिंपल प्रोविजन बनाता है और जब मेरा कोई भी एम्प्लॉय 5 साल बाद छोड़ के जाएगा उसको उसमें पैसे दे देता है. सो इन दैट सिनेरियो द सेक्शन 40A7 इज एप्लीकेबल और 40A7 में 31 मार्च को जितना पेमेंट नहीं हुआ, जितना बच गया, सारा का सारा डिसअलाउ होता है. Remaining will be allowed in the year in which the SSC have actually paid. So please do not confuse between 40A7 vis-a-vis 43B. Either one has to report under 40A7 or it has to be reported under 43B. Double reporting should not be done. It will create problem to the SSC, and CPC we know are issuing additions because based on 43B vis-a-vis 40A7. So इसलिए आप इसका please carefully you should report it in a tax audit as a proper manner. So ये 40A7 vis-a-vis 43B we need to put it correctly. Then there is a clause with respect to 43B where we have to write all GST payments, we have to write all employer contribution to PF and ESI. So employee contribution already reported. Now it is a time of employer contribution, and only those employer contribution which have been outstanding as on 31st March, and then out of this, if entire amount is paid during the year or before filing of the return of income, that it is allowed. Otherwise, it is not allowed. Bonus has to be reported under 43B. So all these kinds of stuff has to be reported under 43B. Gratuity I have already told you. Leave encashment provision I have already told you. So these are all subject to 43B that we need to report it appropriately in this column. What I say in here under 43B clause. So that you need to be report appropriately. So these are the main clauses where we need to report, and what are the common mistakes we found that I have already discussed with you. Now, if any member have any query in relation to these clauses, so I'm ready to answer that. Otherwise, we can move further. Any member? Please raise your hands if anyone has any questions. Sir, अपने जो regrouping का बात कर रहे थे अभी ratios के regard में, जैसे आपने वो एक इनकम का एग्जांपल दिया, तो सर पीएनएल के पार्ट में भी हमको वो रीग्रुपिंग बेसिकली पीएनएल फेस पे दिखाना पड़ेगा? नहीं मैडम, पीएनएल फेस पे कोई जरूरत नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट एंटिटी कर रहे हैं या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी कर रहे हैं. कॉर्पोरेट एंटिटी है सपोज, कॉर्पोरेट एंटिटी है तो कंपनीज एक्ट लगेगा, कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो है उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर 2 सर्विस आई है तो आपको दिखाना पड़ेगा. बट अगर आप नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी कर रहे हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है. ओके सर. सौरभ जी ने सर मेरे को एक चीज पूछना है, जो अमाउंट ऑफ लोन एक्सेप्टेंस था, अगर सिर्फ पार्टी इंटरेस्ट ही एक्रू करवा रहा है तो क्या मेरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? वो बिल्कुल करना पड़ेगा सर. अगर आपका लोन जो है ओपनिंग में था
ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई भी रीपे नहीं किया या स्क्वायर्ड ऑफ कर लिया, दोनों चीजें हो सकती हैं। इन बोथ द सर्कमस्टेंसेस यू शुड रिपोर्ट इन क्लॉज नंबर 31 जो है क्लॉज, उसमें कर दीजिए। सर तो जैसे सिर्फ पार्टी को कुछ साल भर में कोई ट्रांजेक्शन हुआ, सिर्फ इंटरेस्ट ही मैंने एक्रू किया है, तो मेरे को वो रिपोर्ट करना है। देखिए सर, इंटरेस्ट एक्रू करने पे भी डिस्प्यूट है। अब अगर आप इंटरेस्ट एक्रू उसके अकाउंट में करते हैं, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज एडिशन टू द लोन। ओके। और हमारे यहाँ 269 एसएस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जहां पे ये लिखा जाए कि इंटरेस्ट क्योंकि इंटरेस्ट जो आपने लोन बढ़ाया वो अदर देन अकाउंट पे ही चेक है, हाँ, तो इंटरेस्ट के लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है। सिमिलरली जो हमारा क्लॉज है, क्लॉज के अंदर भी इंटरेस्ट को अक्रू करने के लिए कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है जहां पे हम ये कह सके कि इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो 269 एसएस से बाहर है। तो इसके लिए नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि इसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, बट लेकिन जब हम पेनल्टी लगाने जाते हैं तो उसमें एक्सप्लेन कर देते हैं कि इट इज ओनली इंटरेस्ट अक्रूड, तो और ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, इसको छोड़ दिया जाता है। नोएडा टोल रोड का फेमस जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है कि जहां पे ये कहा गया कि अगर जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हैं तो उसके ऊपर आप पेनल्टी नहीं लगा सकते। लेकिन मैं ये कहता हूं कि व्हाई टू गो इनटू दिस काइंड ऑफ व्हाट आई से डिस्प्यूट। आप इंटरेस्ट एक्रूड को एक अलग हेड बना के, अलग लेजर बना के, उसी हेड में लोन पेबल में ही एक अलग हेड बना दे, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन दिस लोन, और उसमें डाल दो। मेन लोन में उसको ऐड ही मत करो। अच्छा। डोंट एड इट इन योर मेन लोन लेजर अकाउंट। एक लेजर अकाउंट ही तो खोलना है आपको फालतू, और जब भी आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो पहले इंटरेस्ट की पेमेंट दिखाओ। ओके। और जैसे उसमें जैसे उसी सेक्शन में अगर टीडीएस कटा है तो मैं उसको, टीडीएस का भी वही इशू आता है ना सर, टीडीएस भी काटे तो वो इंटरेस्ट अक्रूड की तरह ही है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप उसको लोन अकाउंट में करो ही मत, आप उसको एक करंट अकाउंट बना दो या इंटरेस्ट अकाउंट बना दो, वहां पे करो। लेकिन अगर आप ऊपर भी करते हो तो मेरा ऐसा मानना है कि दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड फ्रॉम, क्योंकि आपको जो, और अगर आप करना भी चाहते हो तो नेट करके करो, इंटरेस्ट माइनस टीडीएस का जो है वो अमाउंट आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें होगा क्या कि आपका स्कूटी में केस पिक हो सकता है कि भाई इन्होंने ये अदर, क्योंकि आपको जब सिलेक्ट करोगे वहां पे अकाउंट ही चेक तो सिलेक्ट करोगे नहीं, यू हैव टू सिलेक्ट अदर। मोड ऑफ एडिशन पे तो अदर ही सिलेक्ट होगा, और जैसे ही अदर सिलेक्ट होगा वो फ्लैग रेज हो जाएगा। हाँ। और सर लास्ट, सर अगर इंटरेस्ट फ्री लोन हुआ तो, और अगर कोई भी रिपेमेंट नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, और इंटरेस्ट फ्री लोन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मैडम इंटरेस्ट फ्री लोन है और ओपनिंग क्लोजिंग एज इट इज है, और कोई ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो आइडियली आप अगर 269 एसएस में नहीं भी रिपोर्ट करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर देयर इज नो लोन टेकन और रीपेड ड्यूरिंग द ईयर। यस सर, ओके सर। सो आप उसको नहीं भी रिपोर्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप कर भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेकन ड्यूरिंग द ईयर में 0 लिख देना। सर इसको अगर हम लोग दिखा दें कि ट्रांजैक्शन इज बी डन थ्रू जर्नल एंट्री और थ्रू बुक्स एंट्री ओनली, सर तब भी सर पेनल्टी तो लगी सकती है ना। ओके सर सेक्शन तो वायलेट हो ही गया ना सर, देन इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि भाई वो जब असेसमेंट होगी या स्क्रूटनी या कोई और होगा तब पता चलेगा कि ये जनरल एंट्री क्यों की गई। जनरल एंट्री भी अलाउड नहीं है ना सर, सिर्फ अकाउंट पे ही चेक अलाउड है। सर एक और चीज, जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करते हैं तो हमें सिर्फ टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट रिपोर्ट करना है या टोटल अमाउंट ऑफ परचेज भी रिपोर्ट करना है, क्या करना है दोनों में से? नहीं सर, in case of related party transaction with 48 to be parties, only the expenditure which have been debited to your P&L account, अच्छा, that needs to be reported. ओके, तो पेमेंट से मतलब नहीं है, जितना पीएल में पेमेंट हुई या नहीं हुई उससे कोई लेना देना नहीं। ओके, आपका जितना डेबिट है वो आपको देना है। ठीक है सर, क्योंकि 48(2) जो हमारा सेक्शन है वो डिसअलाउंस की बात करता है। मान लीजिए मैंने किसी रिलेटेड पार्टी से कोई ट्रांजैक्शन कर भी ली और वो एक्सेसिव है, बट मैंने उसको क्लेम ही नहीं किया खर्चे में, तो एओ कैन नॉट ऐड मी अंडर 48(2). ओके, ओनली एक्सपेंडिचर व्हिच हैव बीन डेबिटेड। ओके, आप सेक्शन पढ़े, सेक्शन में इसके हिसाब से। ओके, ठीक है सौरभ जी। या थैंक यू सर। ओके, और बताएं सर, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अब थिंक अपने कंटिन्यू कर सकते हैं बेटा। So I hope there is no other question on this any of the clauses. Now I am coming
on the last part, which is the most controversial part of the tax audit, which is tax audit vis-a-vis 44 AD or tax audit vis-a-vis 44 ADA. Though there might be enough discussion on this at various forums, but still there is some confusion which may left. So I am taking this at the end. So for this, I divide the transaction or the turnover of the SSC into 4 categories. So there may be an SSC whose turnover is between 1 crore, 0 crore, 0 to 1 crore, 1 crore to 2 crore, 2 crore to 10 crores, and 10 crores and above. So if it is a case of an SSC whose turnover is exceeding rupees 10 crore, आपको कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना, सिंपली आपने उसका टैक्स ऑडिट करना है 44 AB A क्लॉज में, कोई और प्रोविजन उस पर अप्लाई नहीं करेगी, सिंपल उसका टैक्स ऑडिट होगा। उसने कितनी पेमेंट कैसे ली, क्या टर्नओवर, क्या उसने प्रॉफिट दिखाया, कुछ नहीं सोचना, सिंपली 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको उसका जो है टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। Then there is a case where the turnover of the SSC is between 2 crore to 10 crore. So अगर कोई SSC ऐसा है जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है, तो मैं आपसे एक एडिशनल क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या 95% पेमेंट और 95% रिसिप्ट क्या वो अकाउंट पे ही चेक से है, वो सॉरी अदर देन कैश है या नहीं। इफ द आंसर इज यस कि वो अकाउंट पे ही वो चेक से है, वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन से है, वो पेटीएम से है, वो किसी भी डिजिटल मोड से है, तो आपको उसकी कोई टैक्स ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, कोई 6% 8% प्रॉफिट दिखाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। देन आई विल आस्क अनदर नेक्स्ट थिंग इज SSC विच इज बिटवीन 1 करोड़ टू 2 करोड़। सो अगर 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक का कोई SSC है जिसकी टर्नओवर है, सो देन मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या वो इलिजिबल SSC है एज पर 44 AD, मतलब क्या वो इंडिविजुअल है, क्या वो HUF है, या क्या वो नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म है, बिकॉज LLP एंड कंपनी SSC आर नॉट एलिजिबल SSC। सो अगर वो एलिजिबल SSC नहीं है, मीनिंग देयर बाय वो LLP है, वो पार्टनरशिप फॉर्म, वो पार्टनर, वो क्या नाम है, वो कंपनी SSC है, तो उन केसेस में उसका टैक्स ऑडिट होगा 44 AB1 में। फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा कि वो एलिजिबल SSC है लेकिन क्या वो एलिजिबल बिजनेस कर रहा है, द पर्सन मे हैव द कमीशन इनकम, द पर्सन मे हैव एन एजेंसी इनकम, तो उस केस में भी उसका टैक्स ऑडिट होगा। बट अगर वो एलिजिबल SSC है और वो एलिजिबल बिजनेस कर रहा है, सो देन देयर इज द प्रॉब्लम। फिर हम आपसे पूछेंगे कि क्या उसने पिछले साल या उससे पिछले सालों में कभी 44 AD ऑप्ट किया था। इफ आंसर इज यस, तो आप 44 AD में चले जाओ, यहाँ पे 44 ABA में नहीं आओगे। बट अगर वो उसने पिछले सालों में कभी भी 44 AD नहीं ऑप्ट किया था, या उसका ये फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, कंपनी है वो सॉरी फर्म है वो इसी साल चालू हुई है, या वो प्रोप्राइटर है, पहले जॉब करता था, अभी उसने बिजनेस करना शुरू किया, इज द फर्स्ट ईयर, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप 44 AD में चले जाएं, या आप यहाँ पे नॉर्मल में आप 44 ABA में अपना टैक्स ऑडिट करा ले, बिकॉज आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ से कम है। सो इन दैट केस वी हैव टू डिसाइड। अब मैं जाता हूं, अगर इफ आई गो फॉर 44 AD, तो या मैंने पिछले सालों में 44 AD लिया हुआ था, तो मैं 44 AD में मेरी टर्नओवर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, मैं एलिजिबल SSC हूं और एलिजिबल बिजनेस कर रहा हूं, सो देन आई हैव टू शो एटलीस्ट 6% और 8% ऑफ माय टर्नओवर एज माय प्रॉफिट्स। बट अगर मेरा प्रॉफिट 6% या 8% से कम होता है, सो मैं 4484 रेड विथ 4485 में जानने के कारण मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना मैंडेटरी है, मुझे उसका टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है, बट टैक्स ऑडिट मेरा होगा 44 ABE क्लॉज के अंदर मेरा टैक्स ऑडिट होगा, A क्लॉज के अंदर मेरा टैक्स ऑडिट नहीं होगा। लास्ट, मेरा टर्नओवर 0 से लेकर 1 करोड़ के बीच में है, मेरा टर्नओवर 70 लाख है, 80 लाख है, तो क्या करूंगा? तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या आप एलिजिबल SSC हैं? आंसर इज नो। क्या आप एलिजिबल बिजनेस कर रहे हैं? आंसर इज नो। मतलब मैं कंपनी हूं, मैं LLP हूं, मैं कमीशन का इनकम कर रहा हूं, मैं जो है वो हो सकता है एजेंसी बिजनेस कर रहा हूं, तो मुझे 44 AD अप्लाई नहीं करता, तो मुझे किसी भी तरह के कोई ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है,
सिंपली अपना P&L बनाऊंगा, अपनी बैलेंस शीट डिटेल भरूंगा और काम ओके। तो बहुत सारे एसएससी जो है, बहुत सारे सीए मेरे से पूछते हैं कि सर मेरी कंपनी की टर्नओवर 55 लाख रुपए, क्या मुझे टैक्स ऑडिट कराना है? आंसर इज आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना। फिर अगला क्वेश्चन होता है कि उस टर्नओवर क्या उनको 8% प्रॉफिट दिखाना है या 6% प्रॉफिट दिखाना है? आंसर इज नहीं दिखाना, तो दैट इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड। हाँ जी, सो जो है, अगर आप एलिजिबल एसएससी और एलिजिबल बिजनेस नहीं करें तो आपको 6% 8% भी दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑडिट कराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप 0 से 1 करोड़ के बीच में सिंपली अपनी बैलेंस शीट भरे, मैटर इज ओवर। लास्ट, आप एलिजिबल एसएससी हो, एलिजिबल बिजनेस कर रहे हो और टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, सो उस केस में हम आपसे फिर पूछेंगे कि क्या पिछले सालों में आपने 44AD ऑप्ट किया था? आंसर इज हाँ किया था, तो आप 44AD में चले जाओ। अगर आपने 44AD ऑप्ट नहीं किया था तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन के तहत आप अपना बैलेंस शीट P&L भरो और आप अपनी रिटर्न फाइल करो और इसके अलावा कुछ नहीं करना। बट अगर आपने पिछले सालों में किया था तो 44AD में चले जाओ, 6% और 8% दिखाओ। अगर 6% और 8% से कम है तो 44AD 4 और 5 के तहत आप दोबारा आपको टैक्स ऑडिट कराना है। 44AB E क्लॉज के अंदर आपको जो है उसका क्या कराना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। आई होप मैंने सिंपली सारे सेक्शंस को, सारे सिनेरियोस को लेते हुए मैंने आपको जो है ये 44AD विज़ 44AB जो है मैंने आपको आई ट्राई टू एक्सप्लेन। इसके ऊपर अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आई एम हैप्पी टू टेक दोस क्वेश्चंस नाउ एंड देन वी विल कम टू लास्ट पार्ट व्हिच इज हाउ टू कंप्यूट द टर्नओवर। जी सर। सर लास्ट ईयर मेरा 44AD में हुआ था क्योंकि 8% से नीचे था, बट करंट ईयर में मेरा 8% एक्सीड हो जा रहा है, तो मेरे को क्या कंपल्सरीली 44AD में कराना है कि हम मैडम वो उसमें आप मैडम देखिए, आप लॉ को वायलेट नहीं करते क्योंकि लास्ट ईयर आपका 8% से कम हो गया था तो आपने 44ABE में करा लिया, तो आप अगले 5 साल के लिए तो डिबार हो गए। सो अगले 5 सालों तक आप 44AD में जा ही नहीं सकते। So in that case, you have to get the tax audit done under 44ABE clause only for next 5 years because last year you have gone for that clause. ओके सर, मतलब 8% वाला क्लॉज में एक बार हम चले गए तो हमको 5 इयर्स तक वो करना ही है, भले ही मेरा उल्टा है मैडम। अगर 8% से कम दिखाओगे तो 5 साल के लिए डिबार हो। आपने एक बार 44AD में 8% या उससे ज्यादा दिखा दिया तो अगले साल दिखाओ ना दिखाओ आपकी मर्जी है। अच्छा, मतलब अगले साल में ऑडिट का फिर जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपने एक बार दिखाया था तो अगले बार जरूरत नहीं है, बट अगर एक बार आपने कम दिखा दिया तो अगले 5 साल तक ऑडिट कराना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ओके जी। any other query? I think one more hand has been raised. सर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बड़ा सबको कंफ्यूजन है ये F&O टर्नओवर को लेके। लॉस जब आता है ना, मैं अभी टर्नओवर बता रहा हूँ सर, वैसे आप चलिए पूछिए सर, आप पूछिए, कोई बात नहीं। लॉस आता है तो सर क्या करें? सर अभी टर्नओवर, अगर आपका F&O का लॉस है, देखिए सर पहली बात तो क्या है कि F&O की जो टर्नओवर होती है वो सारी जो है चेक से होती है, तो आप उसमें वो 10 करोड़ तक का बेनिफिट आप ले सकते हो प्रोवाइडेड कि आपका कोई और बिजनेस ना हो। बट अगर आपका लॉस आता है बट आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई ऑडिट नहीं कराना। बट अगर टोटल इनकम आपकी 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा अंडर 44ADE क्लॉज। बट अभी आपको सीपीसी वाले एक और कहते हैं, अगर आपके फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है और आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो आप सिंपली लॉस को जो है अपने P&L में बना के भर दो स्पेकुलेटिव के, या अगर F&O है तो नॉर्मल बिजनेस के लॉस में आपको वो लॉस कैरी फॉरवर्ड 8 साल के लिए मिल जाएगा, तो आपको किसी तरह की कोई टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं। आई होप इट इज क्लियर सरोज जी। हाँ इट इज क्लियर। संजय जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। संजय जी थिंक वो है नहीं सर, अपने आगे कंटिन्यू फिर कर सकते हैं एक बार। चलिए जी, लास्ट पार्ट
सो लास्ट पार्ट जो है मैं F&O का भी दोबारा आऊंगा, अभी मैं बताता हूँ उसको। सो लास्ट पार्ट है हाउ टू कंप्यूट द टर्नओवर। सो इस टर्नओवर को हम कैसे कंप्यूट करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सो टर्नओवर इज टू बी इंक्लूडेड, शुड बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी और शुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। सो इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है कि अगर एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूसिव बेसिस पे मिली हुई है तो उसका जो टर्नओवर होगा वो इंक्लूसिव मानते हुए जीएसटी इंक्लूड करके लेंगे। बट अगर एसएससी की बुक्स जो है एक्सक्लूसिव बेसिस पे बनी हुई है तो जीएसटी कंपोनेंट को हम टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो कंपोजिशन डीलर है तो इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नॉर्मली वो इंक्लूड नहीं होती, इसलिए नहीं करेंगे नॉर्मली। नेक्स्ट, टर्नओवर के अंदर क्या रेम्यूनरेशन फ्रॉम द फर्म और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड होगा, या कोई एसएससी ऐसा है जिसको सिर्फ रेम्यूनरेशन ऑफ द फर्म मिल गया 5 करोड़ रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया 50 लाख रुपए, तो क्या उसका टैक्स ऑडिट होगा? दैट्स अ मेजर क्वेश्चन which comes in many cases. So answer is इसका कोई टैक्स ऑडिट नहीं होगा, because the partner of the firm is not doing the business and remuneration from the firm is not regarded as turnover or receipts from the business. It is merely the remuneration is chargeable to tax under the head PGBP. So अगर remuneration किसी का है और वो लिमिट के अंदर ऐड नहीं होगा, जैसे इंटरेस्ट नहीं ऐड होता बैंक का इंटरेस्ट, वैसे ही remuneration and interest from partnership firm is not to be included in the turnover. Now the last part is, which is very confusing, is how to compute turnover in case of F&O business. Future and options के केस में आप टर्नओवर कैसे कंप्यूट करेंगे? This is an important part what we have to report. फ्यूचर एंड ऑप्शन दो तरह के होते हैं, एक फ्यूचर होता है और एक ऑप्शन होता है। मेरे को ज्यादा नहीं आता, बट जितने लोग आप बैठे हैं अगर मैं कहीं गलत हूं तो प्लीज मेरे को बता देना। फ्यूचर के अंदर क्या होता है कि मैंने कोई फ्यूचर आज एक्स रेट पे खरीदा और मैं उसको वाई रेट पे बेच देता हूं, या जो भी उसका एक्सपायरी होगा उस दिन वो एक्सपायर हो जाएगा, तो जो भी डिफरेंस होगा वो मुझे मिल जाएगा। और देयर इज अ मार्क टू मार्केट जो डेली बेसिस पे मुझे मिलता है या लिया जाता है, डेबिट क्रेडिट होता है, वो मार्क टू मार्केट। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कहता है कि फ्यूचर ट्रांजैक्शन के अंदर जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे तो जितने रेट पे मैंने फ्यूचर खरीदा और जितने रेट पे मैंने फ्यूचर बेचा, उनका डिफरेंस, अगर लॉस है तो लॉस और गेन है तो गेन, दोनों अलग अलग निकाल के पूरे साल के उनको एग्रीगेट कर ले। सो मेरा गेन 3 करोड़, मेरा लॉस 2 करोड़, सो मेरी टर्नओवर होगी 3 + 2 5 करोड़। तो मेरी टैक्सेबल इनकम जो है वो 1 करोड़ ही है, 3 करोड़ प्रॉफिट माइनस 2 करोड़ लॉस, 1 करोड़ इज माय टैक्सेबल प्रॉफिट। बट for the purpose of tax audit, my turnover will be computed as 3 crore plus 2 crore equal to 5 crore. So ये मेरी turnover होगी in case of futures. Then comes option, और ये सब मेरा क्या होता है, ये मेरा regular business है, there is no speculative business. So future F&O transactions are normal business, not the speculative. Now next question comes कि मेरा option है, either it will be a call option or it will be a put option. Somebody will write the option and somebody will receive the option. तो हम इसको कहते हैं जो लिखता है वो seller of the option होता है और जो लेता है वो buyer of the option होता है. So buyer of the option will buy the option and pay option premium या option commission, और जो writer या seller of option होता है he will receive the option premium और option commission, जो भी हम इसको कह ले, वैसे premium कहा जाता है, ऑप्शन प्रीमियम वो रिसीव करता है। सो मान लीजिए मैंने एक कॉल ऑप्शन लिखा और सरोज जी ने वो कॉल ऑप्शन खरीदा और वो 10 रुपए उसका ऑप्शन प्रीमियम था, ऑप्शन विल एक्सपायर इन 60 डेज टाइम। और मान लीजिए वो जिस शेयर का ऑप्शन था वो 100 शेयर्स का लॉट था और इन्होंने 10 रुपए मुझे पे किए, तो इन्होंने मुझे 10 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1000 रुपए इन्होंने मुझे पे किए, क्योंकि मैं सेलर था, ये बायर थी। So 1000 I received, Sarojji have paid 1000. Now on 60th, before the 60th day, Sarojji ने क्या किया, वो ऑप्शन आगे किसी को 16 रुपए में बेच दिया। So Sarojji have sold this option again to somebody at 16 rupees. तो इनको क्या मिला, 16 multiplied by 100, which is
1600 रुपीज ही विल रिसीव। इन्होंने पे कितने किए थे? 1000। सो जो डिफरेंस बिटवीन दीज 1600 एंड 1000, तो 600 रुपए की इनकी टर्नओवर हो गई। वो मान लीजिए पल्लवी जी आपने ऑप्शन खरीदा था 16 रुपए में, अब वो ऑप्शन एक्सपायर हो गया। ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी either you have exercised the option or you have not exercised the option, तो हम इसको कहते हैं in the call money और out of money। सो अगर आपका कॉल ऑप्शन वैलिड ऑप्शन था तो इन दी कॉल मनी थी, तो आई एम लायबल टू पे यू सर्टेन प्रॉफिट और सर्टेन अमाउंट विच विल बी योर प्रॉफिट एंड माय लॉस। सो मान लीजिए मेरा 5000 रुपए मुझे आपको वो देने पड़े ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द कॉल। सो मेरे लिए वो 5000 रुपए का लॉस हो गया और आपके लिए क्या हो गया? 5000 रुपए के 5000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सो इस केस में मेरी टर्नओवर होगी 5000 रुपए का जितना लॉस हुआ प्लस जो 1000 रुपए मैंने ऑप्शन प्रीमियम रिसीव किया, दिस इज 66,000 इज माय टर्नओवर। पल्लवी जी आपने, आयल जी प्लीज आप म्यूट कर लें। आपके लिए क्या हुआ? आपको 5000 रुपए का प्रॉफिट मिला प्लस आपने जो 16 रुपए का जो प्रीमियम पे किया, 1600 रुपए का, दिस so 5000 plus 1600 rupees what you have paid is your turnover। so meaning thereby options के केस में जितना भी मेरा प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द पीरियड हुआ वो प्लस जितना भी मैंने जो है अपना शेयर प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम रिसीव किया या ऑप्शन प्रीमियम पे किया, that amount is to be regarded as turnover in case of option transaction। सो फ्यूचर और ऑप्शन में इस तरह से हम जो है अपनी टर्नओवर कंप्यूट करेंगे और उस टर्नओवर को कंप्यूट करके अपना जो है टैक्स ऑडिट करेंगे। अब सरोज जी का क्वेश्चन ये था कि जी मेरा 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया और 2 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। अज्यूम करते हैं इसमें इनका 20 लाख रुपए का ऑप्शन प्रीमियम पेड भी था, ठीक है जी। 3 करोड़ का प्रॉफिट, 2 करोड़ का लॉस और 20 लाख रुपए का ऑप्शन प्रीमियम पेड। अब इसको हम अपने बुक्स में कैसे दिखाएंगे? सो आप सेल साइड में दिखाइए प्रॉफिट फ्रॉम एफ एंड ओ बिजनेस 3 करोड़, डेबिट साइड में दिखाइए लॉस फ्रॉम एफ एंड ओ बिजनेस 2 करोड़ और एक्सपेंसेस में दिखाइए ऑप्शन प्रीमियम पेड 20 लाख, नेट प्रॉफिट 80 lakhs। सो दैट इज हाउ यू विल रिफ्लेक्ट द सेम इन दी P&L अकाउंट और योर बुक्स ऑफ अकाउंट। सो इस तरह करके आपको बुक्स बना के आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ यू कैन डू इट इन केस ऑफ F&O ट्रांजेक्शन। आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट। सर इसमें टैक्स ऑडिट जब भरेंगे तो उसमें टर्नओवर क्या लेंगे? 3 करोड़ या फिर क्या अलग से कैलकुलेट करके लेंगे? सर आप इसमें कुछ नहीं करें, आप 3 करोड़ रुपए 3 वहां पे और अब एक नीचे नोट डाल दें, फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट द टर्नओवर इज 5 करोड़। सिर्फ आप नीचे एक नोट डाल दें उसी बैलेंस शीट में जो आप बनाएंगे उसकी, ठीक है सर। जो क्योंकि आप स्कैन बैलेंस शीट अपलोड करेंगे, क्योंकि सर ये जो 5 करोड़ की टर्नओवर है ना सर, ये डिपार्टमेंट ने नहीं कहा कि ऐसे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि डिपार्टमेंट को खुद को नहीं पता कि टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करनी है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा है कि ऐसे करनी है। सर बड़ा कंफ्यूजन है F&O के केसेस में, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्लाइंट्स आते हैं और फिर वो उपाय नहीं है, विदाउट टैक्स ऑडिट रिलीज करते हैं और वो CPC अप्रूव भी करता ही है उसको, लेकिन फ्यूचर में क्या आएगा पता नहीं। सर वो तो इसलिए करता है कि उसको खुद को नहीं मालूम करना क्या है। अब आप मान लो वो एक आप अपना अकाउंट्स का पेपर हिस्ट्री के प्रोफेसर से चेक कराने पहुंच गए, करेक्ट। अब वो क्या करेगा बेचारा, वो आपको उसको यही नहीं पता बैलेंस शीट क्या होती है, और आप कंसोलिडेशन का एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करके दे के आ रहे हो उसे, तो वो क्या करेगा? ना चाहते हुए पूरे नंबर दे देगा। अब वो थोड़ी बताएगा कि मुझे नहीं पता। सर रेशियो कैलकुलेशन में फिर 5 करोड़ को ही लेंगे या नहीं? सर रेशियो कैलकुलेशन के अंदर आप जो है अगर आप खाली F&O ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप टोटल 5 करोड़ को लेके करें। विकास जी इंट्राडे ट्रांजैक्शन के अंदर भी आपको नेट गेन और नेट लॉस लेना है और उनका एग्रीगेट ही टर्नओवर होती है। जो भी ट्रांजैक्शन आपने अदरवाइज देन डिलीवरी ली, चाहे वो फॉरेक्स की हो, कमोडिटी की हो, इंट्राडे हो, वो सारी की सारी डिफरेंस लेके ही लेनी है। ये हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का गाइडेंस नोट कहता है, रिवाइज वाला भी यही कहता है।
हाँ जी सर, एनी अदर क्वेश्चन और कोई रह गया हो सर? Clause 17A of the 3CD we require to report about, हाँ सर, ये सर 27A के ऊपर कुछ लोग बिना बात की कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। वो वहां पे वर्ड लिखा हुआ है सेनवेट, सो देयर आर फ्यू प्रोफेसर हु इज सेइंग कि भी आईटीसी नहीं लिखा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिखा। सर earlier service tax law have been subsumed into GST, so terminology सेनवेट और आईटीसी एक ही बात है। आप उसको प्लीज समझिए, आप लिटरल मीनिंग में मत जाइए, भावनाओं को समझे। और आपसे आईटीसी की ही डिटेल मांग रहा है, तो आपको ओपनिंग आईटीसी, अवेल्ड, यूटिलाइज्ड और क्लोजिंग आईटीसी आपको उसमें देना पड़ेगा। एज पर बुक्स आप उसको दे दें। हाँ जी, एक संजय जी का बार बार क्वेश्चन आ रहा है, एक मिनट जरा इसको समझ लें। सर ये देखिए क्वेश्चन एक्चुअली मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, उनका कुछ इशू हो रहा है। मैं बता देता हूँ, मेरे को क्लियर हो गया। एक तो संजय जी आप टेस्ट करना बंद करो, आपने ये सेम क्वेश्चन गिरीश आहूजा जी से पूछ लिया था, मुझे मालूम है, क्योंकि उन्होंने मेरे से ये चीज डिस्कस करी थी। अब मेरे को समझ में आ गया। सर इनका ये क्वेश्चन है, एक्चुअली क्या है, सेक्शन के अंदर बड़ा ये थोड़ा सा लूप होल है। संजय जी मैं आपको बता देता हूँ, सर ने भी आपको शायद यही जवाब दिया होगा, क्योंकि हमारी बात इसी पे होती। सर हमारे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई अमेलगमेशन हुआ, या कोई डीमर्जर हुआ, या कोई टेक ओवर हुआ, मतलब कंपनी जो फर्म को कंपनी में बना लिया एक्सेट्रा, तो डेप्रिसिएशन जो है वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेज के अंदर जो है वो कंप्यूट होगा। आप पूरे 365 डेज का जो है डेप्रिसिएशन कंप्यूट करोगे, जितने दिन जिसके पास रहा उसमें क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनेट हो जाता है। बट डेथ के केस में वहां पे वर्ड यूज किया हुआ है अदर देन दैट, तो डेथ के केस के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं लिखा हुआ, ना ही कोई अप्लाई हुआ। तो संजय जी इसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं। वो बेनिफिट कैसे होगा मैं आपको बताता हूं कि आप पूरा डेप्रिसिएशन डिजीज के हाथ में, जब जुलाई में डेथ हुई तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं पूरा। उसके बाद उसकी जो WTV आई वो इन दी हैंड्स ऑफ द लीगल हेयर वो बिजनेस आ जाएगा, वो उसकी ओपनिंग WTV बन जाएगी और उसके ऊपर वो भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। तो लूप होल है एक्ट में, दोनों वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, बट असेसिंग ऑफिसर आपको अलाउड नहीं करेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेप्रिसिएशन। इट हैज टू बी द फुल ईयर, यू कैन नॉट टेक ट्वाइस द डेप्रिसिएशन इन टू हैंड्स फॉर द सेम एसेट्स। तो ये मुझे थोड़ा सा ये नहीं लग रहा, मतलब मेरा अपना पर्सनल व्यू था कि ये एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग का पार्ट हो सकता है। बट अगर आप नॉर्मल केस में 365 डेज का पूरे साल का डेप्रिसिएशन क्लेम करें और उसको 4 महीने डिजीज के हाथ में दे दें और रिमेनिंग पार्ट जो है उसके एसएससी के हाथ में दे दें, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दैट यू कैन ऑलवेज डू इट इन दैट फैशन। तो ये जो है मैं आपको इसका आंसर दे दिया है। इसके बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप मेरे से पर्सनली बात कर ले, बट इसके ऊपर मेरा बहुत डिटेल डिस्कशन और हम एक्ट लेके बैठ के हमने ये पर्टिकुलर पॉइंट हमने देख लिया था। मतलब सर देखिए सब है ना, मतलब टेस्ट करते हैं कि स्पीकर को आता है या नहीं आता। बट एज ए टिपिकल क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस कर लेता हूँ सर से, गिरीश जी से। संजय जी ने मान लिया कि हाँ उन्होंने पूछा था क्वेश्चन। नहीं, उनका तरफ वॉइस का इशू रहा, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं एक्चुअली पर्सनल में कि आप पूछ लो ये क्वेश्चन। मैं क्लियर नहीं हो रहा, तो उनका राइटिंग में तो मुझे भी क्लैरिटी नहीं आ रही थी। आपको क्या, मेरे को भी नहीं आती अगर मुझे नहीं पता होता कि इशू क्या है, क्योंकि ये मैंने डिटेल में देखा हुआ है, इसलिए मुझे पता है ये इशू। ओके सर। और कोई क्वेश्चन है? सर एक चीज और आप बता दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो क्या सब 90% सबको पता है, बट नहीं भी पता हो तो फिर क्लैरिटी रहती है कि साइनिंग ऑफ टैक्स ऑडिट लेटेस्ट ड्यू डेट क्या है, साइनिंग अपने कर सकते हैं। सर साइनिंग ऑफ टैक्स ऑडिट इज बाय 30th of September, रिटर्न फाइलिंग इज अक्टूबर। तो 30 days बिफोर दी रिटर्न जो है वो आपको टैक्स ऑडिट करना है।
अगर आपकी एसएससी के ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोविजन अप्लाई होती है, इफ यू आर कवर्ड अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग, देन दी टैक्स ऑडिट डेट ड्यू डेट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। तो आपको इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, क्योंकि वेरियस पहले भी हमने सुना था, उसमें क्या है, साइनिंग ऑफ टैक्स ऑडिट बोल रहे हैं कि इट शुड बी बिफोर द ड्यू डेट। तो मतलब ड्यू डेट इन केस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस गेट्स एक्सटेंडेड ऑटोमेटिकली। सर अभी क्या होगा, सर अभी जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट इज लिंक्ड विद द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। करेक्ट। 30 days बिफोर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपको करना है। In case of SSC who is liable for tax audit, their due date is November, 30th November. So 30th November से 30 days before, तो वो आ गया अक्टूबर। तो अगर आपका SSC ट्रांसफर प्राइसिंग में कवर्ड नहीं है तो 30 सितंबर है, और अगर आपके SSC पे ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लगती है तो वो 30 अक्टूबर है, ड्यू डेट ऑफ फॉर नॉट ओनली फॉर टैक्स ऑडिट बट फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट ऑल्सो। नहीं तो इसका मतलब वो सर 30 सितंबर को अपने टैक्स ऑडिट साइन कर सकते हैं, विच इज नॉट अ वायलेशन। सर 30 सितंबर को क्यों सर? आप, मैं कह रहा हूँ आप 5 अप्रैल को ही कर देते। नहीं पहले नहीं, मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ सर। आप नहीं 30 सितंबर कौन से वाली, जिनको ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है? नहीं, प्लेन सिंपल जिसपे ट्रांसफर सिंपल तो प्राइसिंग 30 सितंबर तक आप कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं। और ट्रांसफर प्राइसिंग है तो अक्टूबर तक, नहीं तो सितंबर तक। ठीक है सर। और डेट एक्सटेंड होने की कोई चांस नहीं है, तो प्लीज आप ऐसी आशा ना रखें कि डेट एक्सटेंड होगी। अगर हो जाए तो आपकी किस्मत है, अदरवाइज प्लीज प्लान योर वर्क अकॉर्डिंगली। सर एक क्वेश्चन है विशाल गर्ग जी का, एक सेकंड सर मैं पढ़ देती हूँ। सर इन केस ऑफ जीएसटी रिवर्सल due to non-payment of amount to creditors within 180 days, client refuses to reverse the same. So sir, should we disclose in 3CD? मैडम ये क्या है, ये विशाल जी ये क्या है 180 डेज? मुझे तो पता नहीं सर। एक्चुअली मैं इनकम टैक्स एक्ट का ऑडिट कर रहा हूँ, मैं जीएसटी लॉ में ऑडिट नहीं कर रहा, मेरे को तो जीएसटी आता ही नहीं। सो रिवर्सल होगा नहीं होगा ये क्लाइंट देखेगा, उसका P&L इम्पैक्ट क्या है? P&L इम्पैक्ट तो 0 है। सो मैं 3CD में क्यों जबरदस्ती, why to do an over disclosure? So this is not my cup of tea. बट हाँ, किसी भी साल में अगर ये जीएसटी को एसएससी अपने यहाँ पे अगर वो जीएसटी रिवर्सल करेगा तो क्या होगा? वो अपना एक्सपेंस क्लेम करेगा ना। सो ही हैज टू पुट हिज मोर एक्सपेंस, क्योंकि जितना जीएसटी उसने क्लेम किया वो उसे मिलेगा नहीं, तो एक्सपेंस डेबिट होगा। तो अगर वो अगले सालों में जाके करेगा तो प्रायर पीरियड हो जाएगा, तो प्रायर पीरियड में रिपोर्ट करूंगा। और वो इसी साल कर देता है तो इसी साल मुझे करना है। आई हैव टू गवर्न बाय हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नथिंग टू बी डन ओवर एंड अबव बुक्स। और आप याद रखिए, आप इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट कर रहे हैं, ना कि जीएसटी लॉ में। अब मेरे जैसे का क्या होगा जिसको जीएसटी आता ही नहीं है? मुझे तो आपके पास आना पड़ेगा विशाल जी समझने के लिए पहले। सर एक ये विकास जी ने जैसे है कि अपने जो टैक्स ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी जो आपने समझाया हमें, वो सर अपने टैबुलर फॉर्मेट में या कैसे शेयर कर सकते हैं क्या? कोशिश करूंगा मैडम, अभी कुछ नहीं। उनका रिक्वेस्ट था 44 AD वगैरह ऑप्टेड केसेस, और वो अपने शेयर कर सकते हैं। ऐसा है ना, वो आप उनको बोले यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग है, उतने मिनट की रिकॉर्डिंग दोबारा सुन ले और बना के मेरे को भेज दे, मैं वेटिंग कर दूंगा, फिर वो आपको दे दूंगा, आप सबके साथ शेयर कर लेना। ऐसा करता, मेरे पास कहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, मैं शेयर। ओके सर, ठीक है, ठीक होगा मेरे पास। सर ये अनिल जी मैंने आपको पहले बता दिया, आपको 30 सितंबर तक अपलोड करनी है, और खाली अपलोड नहीं करनी, एसएससी हैज टू सबमिट आल्सो बिफोर 30th September द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। It is not only upload, it is to be submitted जी। और खाली टैक्स ऑडिट, जितने भी अदर ऑडिट्स हैं, चाहे वो ATIA की रिपोर्ट हो, चाहे वो 10B की रिपोर्ट हो, जो भी है वो सबको 30 सितंबर से पहले आपको करना है। सर एक कंफ्यूजन होता है, डेट ऑफ साइनिंग ऑफ रिपोर्ट, डेट ऑफ सबमिटिंग ऑफ रिपोर्ट। सर डेट ऑफ साइनिंग और सबमिटेड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, आप जब मर्जी साइन करो उसी दिन, अब तो अपलोड होनी है, सेम डे पे कर लो।
आप ऐसा तो है नहीं कि साइन एक हफ्ते पहले कर देते हो उसके बाद किसी को कहते हो लो भाई अपलोड करो। सब कुछ आजकल सब कुछ साइमल्टेनियसली होता है। बट अगर फिर भी आपका ऐसा कोई केस है जहाँ पे आपने एक दिन पहले साइन कर ली, यूडिन जनरेट कर लिया, आप उसमें साइनिंग वही रहेगी, आप अगले दिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद अपलोड बाद में कर सकते हैं। सर मैनुअल साइनिंग की आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज द इनकम टैक्स रूल सेज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी इन ई फॉर्मेट। तो मैनुअल साइनिंग की कोई वैल्यू नहीं रह गई। सर यूडिन जनरेट होने के बाद कई बार वैसा होता है ना कि सिस्टम काम नहीं कर रहा तो नेक्स्ट डे सबमिट करते हैं, तो नेक्स्ट डे सबमिशन डेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप अपलोड साइनिंग डेट उस दिन करा लो, एक दिन पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ओके, थैंक यू सर। कोई ऐसे बट वो 30 तारीख से पहले हो जाना चाहिए सर सबमिट। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। सर जो भी करना है 30 तारीख पहले ही करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। हाँ 30 तारीख को 30 तारीख ऐसा है सर, 29 तारीख तक कर लो, 30 तारीख छुट्टी रखना। सर एक लास्ट क्वेश्चन, डेट एक्सटेंड होगा क्या? मैडम अभी तो बताया कि नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? कुछ नहीं, कैसे होगा क्या, आप उस जो आ जाएगा वो काम करे, नहीं आएगा घर बैठे अपने। व्हाई आर यू टेकिंग सो स्ट्रेस? आप बोर्ड लगा दें कि 25 तारीख से मेरे ऑफिस में एंट्री बैन है, तो 25 सितंबर के बाद जो आएगा काम ही नहीं करना। सर कैलकाटा में वैसे भी 20-25 तारीख के बाद काम नहीं होता, खाली सीए दुर्गा पूजा होगी आपके यहाँ। हाँ खाली हम ही काम करते हैं और कोई काम हम ही काम करते हैं। हाँ देखिए सर, ये मिथ है, आप ही काम करते हो ऐसा नहीं है सर। अकाउंटेंट भी काम करता है सर, वो 28 तारीख को ही 27-28 को ही बुक्स बनाता है। नहीं सर, हमारे हिसाब से मतलब हमारी जो लॉ की है या हमारे जो ट्रेड के आदमी है प्रोफेशनल वही करते हैं बेसिकली, बाकी तो सब एंजॉय करते हैं। सर वी हैव टू डू इट, वी हैव नो ऑप्शन, वी हैव नो ऑप्शन, वी चूज। सर ऐसा थोड़ी है सर, अगर आप मान लीजिए दुर्गा पूजा चल रही है और एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो डॉक्टर मना थोड़ी कर देगा। सही बात। He has to go, even if it is his marriage anniversary or birthday, he has to go. That is his profession. He chooses to do that. So we chooses to do this. That's why we are doing it. If somebody is not liking it, then they may select करने वाले for any other thing. अभी जैसे वो विनोद जी आए थे, वो सेबी का काम करे, आप सेबी का काम कर लो। सही बात। We choose this for correct. But we need to plan our work in such a way that it should not be too much stressful for all of us. Correct. And nowadays we need to take care of our health. और कोरोना ने सबको ये सिखा दिया है कि हेल्थ है तो सब कुछ है, नहीं तो पैसे लेके भी लोग कुछ नहीं कर सकते। सही बात। इसलिए my request is plan your work accordingly. And ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। The only thing is you need to plan. सही बात। आप प्रॉपर प्लान करें, आप हो जाएगा काम। ठीक है सर, any other thing? Not, if nothing is there, then thank you very much. Thank you very much sir. तो सर अब मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ on behalf of my organization News Exchange and on behalf of all the participants who were present. सर मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है। आप बोलिए मैडम। सर एक्चुअली क्या हुआ था कि लास्ट टाइम 44 ABE में एक जन का 8% से थोड़ा ज्यादा ही था प्रॉफिट, बट गलती से वो 44 ABE में ऑडिट हो गया। अब हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, अब आप उसी में 5 साल ऑडिट कराओ। अब वो करना ही पड़ेगा क्या सर? आप 5 साल ऑडिट करना ही पड़ेगा, सिस्टम अलाउ नहीं करेगा वो आपको। अच्छा, बट उसका नहीं था, गलती से हो गया था सर, 8% से थोड़ा सा ज्यादा था, 8.25 या 8.5। गलती से होना क्या होता है? आपने ITR में क्या दिखाया? ITR 4 भरा या उसका, या नॉर्मल वाला ITR भरा? सर ITR 3 भरे थे। 3 भरे थे तो गलत कर दिया ना, आप रिवाइज करके उसको 4 कर देते 31 मार्च से पहले। तो हाँ सर, अब सर हो गया, अब उसमें सर फिर वो करना ही पड़ेगा। अब 5 साल करो ना ऑडिट, क्या दिक्कत है? पेनल्टी भरो, सर फीस भी मिलेगी ना, उसमें देयर इज नो हार्म इन इट। अरे सर फीस का लेते हैं, फीस तो हम लेते ही नहीं है ना, दिक्कत तो वही है मैडम को, ही तो दिक्कत आ रही है। या तो मैडम ने उसकी इस साल 44 AD में ऑलरेडी जुलाई में भर दी है। नहीं सर नहीं भरे, इसीलिए मतलब कंफ्यूजन में थे। अरे तो मैडम नहीं भरे तो 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा, उससे बेटर है आप ऑडिट कर दो।
नहीं सर, ऑडिट 5 साल का करना है, वही सोच के इस बार भी छोड़ दिए थे, बट वही हम सोच रहे थे कि अगर आप कोई और वे आउट हमको दे पाते तो करना पड़ेगा, you have to do it because you have already opted for 44 ABE clause, so hence you have no option but to do it for next 5 years. ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर सेशंस आल्सो Thank you, sir. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको बीच में इंटरप्ट भी किया हमने, योर हाइनेस सर, और फिर वापस ज्वाइन कराया, तो ठीक है, सर्कमस्टेंसेस हो गया ऐसा। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, डोंट प्लीज डू नॉट वेयर। मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा, बट ठीक है, इट्स ओके, नो इश्यूज। कोई बात नहीं सर, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम, और मैंने बुरा बिल्कुल नहीं माना, बल्कि अच्छा हुआ मैं कुछ और काम कर रहा था वो कर लिया। नहीं करेक्ट, बहुत अच्छा सेशन हुआ सर, एंड इट वाज वेरी डिटेल डिस्कशन, और सबको क्लैरिटी मिली आपके इस सेशन से। जो भी डाउट्स थे, फ्रॉम छोटे से छोटे डाउट्स लेके सारे जो भी थे, पूरे क्लियर आउट में। सो वी आर थैंकफुल टू यू वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सरोज जी। कप ऑफ टी है, वर्चुअल में अपने कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए समय रहेगा। पेनल्टी लगा देंगे सर, पेनल्टी लगा देंगे ना, जब आप दिल्ली आओगे तो पी के जाना, और मैं कभी तो कलकत्ता बुला के पिला लेना सर। वो तो बिना पेनल्टी के पीने में ज्यादा मजा आएगा सर, पेनल्टी रहेगी ना तो मन में तकलीफ रहेगी थोड़ा सा, वी आर बीइंग पेनलाइज्ड। चलिए सर, एनीवे, चलिए सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू पल्लवी जी आल्सो। थैंक यू सर, थैंक यू।